Okay, so hello everyone. I am live again, and this time we are again going to sculpt the character which I just did in the last stream. Okay, so let me wait for a while and see if anyone is online or not. Do you have any viewers? यार अभी तक तो कोई व्यूअर नहीं है. Let's wait for a while, and in the meantime I will also join my Discord. Hello. प्रसम Yes. प्रसम मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ. मैं महादेव और मैं बैठ के कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम पे फंसे पड़े हैं. ये अच्छा. मतलब इसको सिंपल करने के चक्कर पे पूरा यूनिवर्स में देख रहा हूँ घूम घूम. यही बताया. बट आई गेस ये स्ट्रीम हो रहा है. नहीं स्ट्रीम नहीं हो रहा है. चाहो तो मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ. सुनो सुनो अभी अभी तो निकलेंगे थोड़ी देर. अच्छा. तुम फ्रीज हो गए हो. ज्यादा फास्ट सॉल्यूशन हो रहा है. तुम फ्रीज हो चुके हो. टाइम कितना हो रहा है? 6:50. नहीं अभी ठीक है. बोलो. तुम्हारा स्क्रीन फ्रीज हो गया था थोड़ी देर के लिए. अभी ठीक है. वो नेटवर्क का भी साउंड दिक्कत आ रहा है. अच्छा सुनो. मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ. आधे घंटे में लौट आएंगे. तुम तब तक करो स्ट्रीम, फिर आते हैं. ठीक है. और उसके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, तब जाके थोड़ा फास्टर हो रहा है. खुद से कर रहा हूँ ना, इतना उलझन है क्या बताए. एक चीज 10 जगह पे हो सकता है, बट अभी ठीक है. वो दिमाग में टैप रखना पड़ेगा दैट वो वहां पे रखा हुआ है. That's the only thing you can do, I guess. अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने इसको बोला कि ये मेरा इंटेंशन है. इंटेंशन के अंदर इंटेंशन का टाइप्स है: क्रिएचर, नेचर, ऑर्गेनिक. अभी ऑर्गेनिक के अंदर नेचर भी आता है या नेचर के अंदर ऑर्गेनिक आता है? नेचर के अंदर तो ये दोनों भी आता है. क्रिएचर भी तो नेचर के अंदर ही आता है. सब कुछ नेचर है. ये भगवान. रुको, आई गॉट इट. तो नेचर को हम बाहर लाते हैं, नेचर में जो है, और नेचर को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा है. इसको फिर अंदर रखने का क्या फायदा. अभी ट्री बीस्ट में भी नहीं जाएगा, ऑर्गेनिक के अंदर भी नहीं जाएगा. हम लोग तो इसको नॉन ऑर्गेनिक घोषित कर दिए थे, याद है? हाँ, अभी ठीक है. ट्री आ गया. फिर ऑर्गेनिक के अंदर ये सबसे मस्त है. मतलब कंज्यूम इट, हार्ट, लिक्विड. अभी जो हम स्लग या ऐसे करते हैं, सक करते हैं, वो तो लिक्विड होता है, राइट? हाँ. पर लिक्विड का खुद का भी तो साउंड हो सकता है जब फ्लो करता है. टेक्निकली हो सकता है. सो इसलिए इसको फ्लैट फ्लेश क्रश. ओके. सुमित, आई ऑलरेडी गॉट 3 व्यूअर्स. मैं थोड़ा उधर कंटिन्यू करता हूँ. इधर मैं आता हूँ थोड़ी देर में.
Okay guys, I think I don't know why it is showing me that sign into chat. Maybe I have to fix my. Let me update this chat thing. Just a moment. Just have to pop this up a little. Live chat. See. Okay, I will just update it. Okay, so we already have got we have 3 viewers right now. Thank you guys for coming up, and I'll just continue with the work very soon. Let me put on my artist wala gloves, and whoa, I have got 1 like. Really great. अभी तक मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया एंड 1 like आ गया. लाइक के भूखे हम लोग, बट दिस इज हाउ इट इज नाउ, तो उसको चेंज नहीं कर सकते. So I have my file open here, and let me switch my screen. You can see the file. Let me continue with the work. I can monitor the chat. I will keep refining this shirt, and in this stream we will finish the shirt things. शर्ट का जो जितना भी स्कल्पटिंग है उसको ये वाला स्ट्रीम में फिक्स करना है. देन फॉर द नेक्स्ट स्ट्रीम आई विल गो विद द शूज. अभी तो लेट्स कंटिन्यू विद द शर्ट. एंड आई रिमेंबर्ड, मैं इसको आई वॉज एक्चुअली वर्किंग on this part in the last stream, so I'll continue doing that. I'll switch my brush. I think I have to again enable my lazy mouse and reduce the brush size. Now let's do it. So yeah, I have not yet opened my reference, so this is the reference. If you can see, this is the look which I am trying to achieve at this stage, and of course it is, I'm not gonna match it 100% as I don't need to. That is just a reference to guide me and give me a visual clue of where I am heading towards. But this is my own artwork which I am doing. I don't have to make an exact copy of it, but of course you have to study references. Technically this is also an artwork. I should have actually collected few original image देख के उसको reference copy करता, तो that is the actual correct way of doing it, but for now it's it's okay. Now let us add all those extra bits, and now I'm falling short of resolution. Maybe मैंने इसको subdivision में किया था. No, I have to subdivide it. So now okay, the main subdivision only when the subdivision level is active. Subdivision to the subdivision level, or delete the subdivision history and try again. Okay,
though I have maximized my computer's limit to subdivide it any further. So there is an option in preference. I think that was this one. I have my preference. The maximum polymesh is fine. Maximum. Let me maximize this as well, and let's see if I can subdivide it. No, I cannot. Okay, so we have to follow some other route for this. So the obvious thing which I can do is I will duplicate the existing subtool. Now I have a duplicate. I will switch off every other thing except these two. So, and one more thing is, I think, active. Yeah, we have to disable everything, but I will enable this too. Now if I go to solo mode, you can see I have two identical subtools. अभी what I am gonna do is एक subtool को I will remesh by using the Z remesher. I will remesh one subtool, and it has got okay. I had subdivisions previously. Okay, great. Okay, for some weird reason at that moment I was getting those warning, but now I think I don't have to remesh it. Great. I just embarrassed myself in front of 3 people watching. I should have not done that. Okay, so I can now enable my subtools. I'll get out of my solo mode, and now I will work on the higher subdivision, that is 10 million. Previously we were at 2 million points. Now I have activated the 10 million point subdivision level. Now I can continue. And it should give me a smoother result. And of course I will bring back my reference and continue working from here. Okay, and one more thing guys, if any one of you discovered this live stream from your YouTube's feed and you don't know me personally, as mostly people who are seeing my live streams are my friends, but if you are a genuine viewer who discovered this channel for the first time, I would like, please, if you can, or if you find this sculpting and all those things interesting, then please consider subscribing. Okay, I will keep refining this part. And one more thing I have to keep in mind, I am not using this symmetry here. That means I have to repeat the exact process once more on the other side. That's fine. I don't want it to be symmetrical and absolute identical, but for that, to achieving that asymmetrical look, I have to work double the amount of time. Great. I think I have a sharp crease over here which I was looking for. I got that. I continue the exact same process for the back side as well, and
Let me continue this. And technically I should continue this line over here as well. Now if you notice here, then you can see this the exact line is not perfect, but that is exactly what you need over here. I don't really want it to be perfect, as it is a cloth, a flexible material, like, so those creases and all will form organically, and that won't be in a straight pattern. So whatever we are getting here is absolutely natural. Now I will add few volumes over here. I'm using my clay builder brush for that, and let me just add a little bit of these lines. I will just increase the volume of my music a little bit and speak a little less while I am adding these folds. Yo brother, yo. Ayush Pandey. Hello Ayush. Hello Ayush, hello. So are you a 3D artist or trying to be a 3D artist? By the way, Ayush, can you confirm me if the video is alright, like if there is any lag or anything like that? Mm. 2D one, okay, so you are a 2D artist. Great. So what do you work on, like any specific style that you'll have to create, or do you have your portfolio? You can share your link, I can view it from here, and other people can also see it. Okay, so for you there is no lag, that is a great thing. By the way, if you wish to share your portfolio, you can just drop your portfolio's link over here, we can view it together from here. Okay, you are still learning. By the way, how old are you, brother? Okay, so I will in the meantime switch my brush and decrease my brush size, and I will add few of these lines. 17, oh, you are quite young. You must be in school, right?
Okay. In which school you were in? Like, are you from Kolkata? I know what. Like, I don't know about you, I just guessed. Okay, so now you're spamming the chat. Okay, I think this one is not what I need. Let me reduce the subdivision and smooth out the part. And for the back part, let me just open the back reference. And yes, I think I have to add. I can use my inflate brush as well. Of course, I need my lazy mouse, and let me try with this inflate one. I just dropped my stylus. Great. Wait a moment. ब्रो, मेरे को स्पाई करना होता तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बुला लेता स्ट्रीम में. Okay, thank you. If you wish to subscribe to this channel, then thanks a lot. By the way, you were just 17, it's Sunday, and you were just here on a live stream. Why don't you actually go out and be with your friends, buddy?
By the way, you are constantly in the chat box, so probably you are, maybe I know you, probably you have logged in with some other ID. Is it true? Okay, bro, carry on. Stay on the chat. You're only giving me engagement. Thank you for doing that. And can you hit the like button once if you have not done that already? I can't really see it. I just went to some random on YouTube, even just, and then I talk to them. That is not a bad habit. You are actually supporting a lot of guys in doing so. Keep doing that. Okay, thank you for liking. Whether do you want to suggest anything? Like, do you want me to do anything specific with this character sculpt? I can make it according to your wish if you want to participate in the making of this. Okay. Hell nah, I am the worst artist you can find in the world. Artist. No, I don't believe that. You cannot be the worst artist. By the way, if you are serious about art, I would love to recommend you something. Just a moment. Let me save my file. I'll show you something. Yep, I got it. So this is a book. If you are an artist, you can definitely try reading this one.
It's the title of the book is like The Creative Act, a Way of Being. I really recommend this book for every artist. Okay, are you interested in that book? Then I can do one thing. I can post the link of that book. It's not an affiliated link. I'll just copy paste the link from Amazon. Nothing affiliated or anything like that. Just a moment. Let me the creative act, right? Here you go, bro. Okay, I cannot really post it here. Okay, the link is way too long. I cannot really post it here. But I think I can always add this one in my description. Can I actually comment it? Let me see. If it is possible, I will comment down the link of that book. From here. No, sorry, I really can't do that. Okay, let me see, just a moment. चेक वंस ये लिंक ओपन होता है कि नहीं. मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा. Okay, it's opening. Yes, you can check that book. I really love this book. Okay, great. Don't just add it in your cart. Try reading it as well. This microphone is coming in my way. Let me put that aside. Now what I'm exactly doing, these are really micro details. So the problem with this kind of work is you really don't see much progress at a chunk. So you have to bear with me. Like, you can see the result after I'm done with the entire thing. Wait, I
check out your channel and you do Photoshop, painting, 3D, 2D. What are you, Batman? Brother, technically, I did everything, pretty much everything. I started my art journey as a traditional painter. I am doing traditional art since a very young age. Like I was hardly 5 or 6. Then I got bored of art. Then I switched to photography. I tried photography back then when I was in school. Those DSLR camera came out and there was a hype about DSLR and all. So I started that photography thing. I mastered it. Then after I captured those photos, then eventually I wanted to edit them, so that led me to Photoshop. Then after I mastered Photoshop quite a bit, then I thought maybe I can try video. Then I started learning Premiere Pro. Then eventually that led to After Effects, and then I wanted to learn even more advanced stuff. Then eventually I got into 3D, VFX, game and all those things. By the way, I'm 27, so I'm doing this for a really long time. But I was never fully active on YouTube, and this year I am trying to change that thing. I want to be more active on YouTube. For last few days I am streaming daily for 2 to 3 hours. In fact, today itself on the morning I was streaming. It is my today's second stream technically. I plan to do 3 streams for today, but I was occupied with some other stuff, so okay, I have to go. Okay, brother. Bye. Thanks for staying for this long. Enjoy your evening. And you are 17. Please go outside and have some real fun. Okay, bro. See you. Yeah, brother. Bye. Let me check this one once more. Okay, I think it's time I go for some big changes, like some broader strokes. Let me try this. Yeah. From time to time you have to switch to
this kind of style. Like if you keep going with this kind of small details, then you usually get caught up into that, and you end up staying at the same place, doing same thing over and over again, which is not really necessary. So the best thing to do in that situation is, like, from time to time, just zoom out, make your brush a little bit bigger, and experiment with wider strokes. Now I want to use the nudge brush to narrow this part down. Not bad, I think it's fine for now. And I can also use the trim dynamic to flatten this part a little. Yes, but I think I am at a higher subdivision level right now. Yes, I'm using 10 million points. So let me check. Yeah, I love the way it turned out to be. It is giving a exact cloth like 5, but I think I can add on to that if I just add a little dent in this region, and it should let me adjust my lazy mouse. Not that much, so let me come in here, and this, yep, I wanted exactly this. Let me refine it even further, and yep, it should have an organic feel to it. Am I moving too slow? Let me change that for you. I will apply a bit big strokes in this region. Let me also smooth out this region, as I am on a higher subdivision level. It's really tough for me to smooth. I have to spend a little extra effort to smooth out these parts on a higher subdivision, and the obvious solution to this is I'll go one subdivision lower and smooth out. Then I can jump back to my higher subdivision level. And if I see here, okay, the crease is looking fine. But I think it is too much. Let me smooth out a little. Not bad. What else I should do? I should focus on this region. Exactly like this. And yes, I should actually also do this cut. This cut segment should be done, but I will do that at the very end, as even if I do this do that stroke right now, you can see if I just take my crack brush and okay, 1 second, where is my crack brush? Yeah, it is the crack brush. Am I on lazy mouse? Okay, so you can see if I draw that line now, the thing is that when I will add those extra wrinkles,
it will cover up that line, so it's better to leave that for the very end. So let me take my clay builder. No, I'll take my inflate brush. I already have the, what do you call, I love the flow of it, but I don't like the placement of this one, so I will use the nudge brush to alter its placement. It is kind of okay, but I have to maintain the balance, like both of them are looking pretty much identical. That is not acceptable. And also I will use my trim brush to reduce the thickness from time to time. Now I think I can use the nudge brush to pull that, or rather push that in the upward direction. Okay, I see this. This fold is looking awesome from the front direction, from the front view, but I have to blend it in this view. This is very much a necessity. And one more thing, I think I have done way too much wrinkles over here. I need to reduce them. Definitely reduce them. I don't need that many. Okay, do we have any new comments? No, not yet. While I am at it with my trim dynamic, I think I can use this one in this region as well. Okay. Now I switch to my nudge brush and I will try to create this particular effect in this region, and nudge brush is perfect for doing that. Well, technically I can use other brush as well,
As you can see, if I just slide that away, then you can see we have lot of cloth related brush, like we can tell, for example, there is a cloth twist brush, we have cloth hook brush. So let us try. I never actually use all of this. I prefer to stick with my those standard brushes and work my way into it, slowly gradually build the shape. But I can try this and see. Okay, so the intensity is way too hard, I need to reduce it by a lot. Then if I try this, you can see it is giving me some kind of a wrinkle. Let me also increase the intensity by okay, no, that is not done. Maybe if I increase this by a lot. Nope, this is the reason why I don't use this kind of brushes. I'm better off sticking to my known brush sets. And one more thing, when I am working only on this part, I think it's better if I isolate this part, then there will be less of distraction, sorry. So I have this part isolated. Now I will only focus on this area. Less distraction, more work. Cool. Let me decrease the subdivision level while I'm working in this region, as I have to smooth out after pretty much every stroke. So now let me also try with the orb brushes. My favorite one is this one. I tend to use this quite a lot. So you see it can speed up your process. Happy with it. Okay, I think I can add a bit volume here, and there should be a zigzag pattern, so one line can come off from this branch. Not bad. And I can also reduce this thing. Yeah, now let me bring back everything and see what we have here is okay. But I think I can now switch to maybe, well, this is technically for rock details, but I think I can use this kind of wrinkles on our clothes also. These are basically wrinkles, so I'm using a rock brush, the brush which is designed to create rock surface. I am using that onto my cloth.
Great. I should receive a Nobel Prize for this. What happened to the music? Let me check, or else I'll be extremely bored. Is this copyright free? I have to check it before I can play this thing. Do we have any copyright for this music? They did not mention anything about the copyright, so it's better if I free background music, copyright free. Okay, I'm switching the music to some another music. I think it's a bit, yeah, this one is copyright free. I have so much details to work with. Like if I show the poly, the wireframe, you can see the amount of details we actually have in this mesh. Actually, we don't need so much details, to be very honest, but my computer can handle it, so why not? And I also have to make sure I'm not disturbing this middle portion. There should be that separation. Okay, I think I've done enough for this. Now let me switch to this collar, and well, this collar is technically part of the shirt, so I have to take care of it. And here, if I show my reference image, you can see they have added this extra stitch over there, but in other reference image, yes, they are, you can see those stitch lines. I think I will do the same for my model as well. So for this I will use symmetry, and I will use this crack brush, and the lazy mouse is perfect. Now let's try. Okay, thus amount of subdivision we have is not sufficient. We have to subdivide it even further. Let's hit Ctrl and D, and you can see we have increased the subdivision. I think 1.18 million is a bit overkill. We can do everything with this much point counts, which is close to 300k. Let me see. Yeah, it's enough for me. Drawing a straight line is always a challenge. You have to not bad. Let me add a middle portion, middle separation should be there, and let me again continue with this.
if you see it from a distance, then definitely you won't notice this slight imperfection, and that line is not straight. But I think we should make this line straight. But again, that is a tough thing to pull off. I think I can actually for now I can keep this as a placeholder, and while doing the retopology, while creating the actual animatable mesh, at that time I can remodel this entirely from scratch, and at that moment I can make these lines pretty much straight. But for now I think this is doing justice to it. Now I also have to connect both of these lines at the back point. Okay, I think I'm losing the. Okay, okay, perfect. Okay, I think I have to reduce these wrinkles. If you see this part is quite clean, but it's like way too much noise in this region. I have to get rid of them, that is for sure. I don't know where I have kept my phone, but it's vibrating for a while. Okay, so it is here. Let me check once. Just a moment, guys. Okay, I have a clean cut over there, and let me save it once more. Just a moment. I have 3 people watching this. Reels बनाते हवे. Product video. Just a moment, guys. Oh my gosh.
Okay, I'm sorry. I have to my three viewers at the moment that I got distracted. I had to take that call. I will again focus over here. Okay, so now we have less of those noise. Now we have the option to choose, either we can go with this kind of a clean look, or we can go with this as well. Okay, how do I decide that? This is the issue with personal projects. That's why personal projects end up taking a really long period of time, as when you have someone to report to, like your team lead and all, then you can leave the final decision to them, and you don't have to waste your time into deciding which path you want to follow. But right now I have two options, and as this is my personal project, so I have to choose any one of them. And like, I have to choose between this style of handcuff and this style of handcuff. Like, it is a bit more puffy, and this is a bit little clean. So there is always this conflict. I'm not sure. So for now, let's try something other than that region. I'll get back to that. But one thing I'm certain, that I need these wrinkles, which, like, these ones, this needs to be here. So I will continue with this part for now. And again, I would prefer to save my file once. You can see we have managed to add all these texture kind of feel to it, but I have to keep doing this. And these are usually in pair. Like, if I am making one bulge over here, there will be another bulge in this direction, in the opposite side of it. Maybe not similar in shape and size and direction, but it should be at least in the mirrored side. Okay, let me keep doing this for a while now. Okay, so 1 घंटा 10 मिनट हो गया. We are live. मैं ज़्यादा प्रोग्रेस किया क्या? What have I done? Let me check. What have I done? Not much really. I think I should speed up my workflow for now.
Okay. Let me hold it for a while and I'll save it. I think I have to pause. I believe I should pause for a while and I don't know, let this sink in for a bit. Like what I'm gonna do with this, I have to decide. So I turned off the perspective mode. Now we are in orthographic view. You can see we have actually added quite a bit of details over here. We can always work on this tie actually, but I don't think we really need to work on this. The amount of details we already have on this tie is enough for us. But while doing the retopo or in the final mesh, I will add a second piece of cloth hanging from there, as you know ties usually have a pair of this thing cloth hanging. So right now we only, if I isolate this, we only have this much, so I need to have the smaller tail of the tie, and I can smooth it out, but if I smooth it will only it will also affect the front part, but I can prevent that from happening by just enabling my back face masking. And now if I smooth it, you can see that it won't affect. Okay, it is affecting. Why? I have my back face masking enabled. Okay, so I have to press shift then enable the back face masking. I was really like I got carried away. So now if I smooth it, it should not affect the front portion. Yep, it is perfect. And it is important for me to smooth out the back part as well, as I'm gonna animate this part of the tie, like the tie gonna be rigged and it will follow the body in a overlapping manner, follow through an overlapping action का जो principle of animation के अंदर आता है, that will be followed during the animation of this character. The tie won't be sticking directly to its body, so when it will animate and flow outside, फिर इसका back part भी visible हो जाएगा. And for that reason we have to make sure कि इसका पीछे वाला part भी एकदम smooth हो. And all these imperfections, this is fine actually. If I want to add few wrinkles and all, वो मैं cluster लगा के rigging के time पे कर सकता हूँ. Not a big deal technically. Yeah, the tie is okay. Now let me select this. Okay. Now, okay, let me focus on these gloves for a while and see my gloves. Okay, so they have added a bit of patterns, textured patterns on the front part of the gloves, but that will give a feeling that this is quite bulky, which I don't really want. I want to keep it sleek. And it's a coincidence that the gloves is also matching with my reference image, as when I actually sculpted these, I was like, at that moment I have not seen that this reference, so it was like I just felt like there should be a rubber gloves or leather gloves on his hand, as he is technically an assassin or a hitman. He will try to prevent his fingerprints from getting him, like he will try to not leave any fingerprints on the crime spot or anything, so technically he should wear the gloves. That's why I had made those gloves. But right now as I see them, the other artworks are also having the exact same gloves, and that is cool.
So if I just take my pinch brush and let me check for once, like if I have the symmetry turned on. Yes, I have the symmetry turned on, and cool. I will simply pinch all of this. And when it comes about pinching, I can also use this pinching thing on the collar. Pinching something tends to make it straight actually. So yep, it is quite straight, not that difficult to pull in. Nope. Let me undo that. Let it be how it is at this moment. I am quite happy. I'm really sorry about the noise. I can't really help it. Okay, so I have to select this subtool first before I can do anything else. I'm noticing that I'm spending way too much time in this region. Whatever I do, I keep coming back to that region. Like, why, bro? Move to some other region. Don't focus all of your energy on one particular thing. I have to keep reminding myself that when you are your mentor, technically I am my own mentor, so I coach myself. I don't have anyone viewing this stream at this moment. Great. What's the time right now? Okay, it's 8 p.m. I will try one thing. Okay, so I had to decide if I'm going with this style or that one, but just instinctively I started reducing its noise. So maybe we are going with that clear look. I will start reducing some noise a bit from here.
I think we have enough details for the shirt. Now I have no other place to put on those big chunky wrinkles. Now all I have to do is like fill these small areas with these small wrinkles. So let me continue with this. Then technically we can call this shirt done. Okay, not bad. Okay, I have two viewers. Great. Why am I adding this random details? Well, if there are some extra cloth, as two fabrics are getting attached in this place, they're getting stitched together, so there will be some extra clothes and that will come down like this due to gravity. So that is the only reason why I'm adding this, though I'll really sorry, though I'll keep this really subtle. Okay,
What do I think about this right now? What? Okay, I think I have enough of those seam thing going on perfectly over in this region, but I have to do the same in this part. Okay, guys, there is a power cut in my area, and right now I'm live streaming with the backup, like through inverter, and I'm not sure for how long I can continue this, so I have to end this stream very soon. Okay, I'll try to finish this part as soon as possible, then I might have to end the stream. There are no power cut, there's no power in my area, but if it's like the power comes back soon, then I can continue with the stream. I hope the power comes back. Okay, still now we don't have any power in my area. It's low shedding. Maybe I have to end the stream, I'm not sure. Let me do this as quick as I can. I'll speed up. I'm sorry I cannot enjoy at this moment. Let me do this a tad bit faster. I can use this brush and it will produce the same kind of result but faster. Great. I think we have
have some wrinkles, and yeah, whatever I have is fine. Now I have to save the file once more. Let me check. Okay. Hello. Sumit, you there? Hello, Sumit, you there? Hello, Sumit. And for this part, I'll pinch them. And then I'll keep adding them. These textures are nice. If I zoom out, then yes, I think I have to smooth out the outer parts a bit. Okay, I can use the pinch brush to narrow this a bit like this. And am I overdoing it? I have to constantly think about that as well. I must not overdo anything. It breaks the illusion of it being like, it feels odd if you overdo something, even though people cannot pinpoint that it is looking this way because there's a little bit more extra detail in this region, but overall they can feel that something is odd. And right now you can't really tell the difference, as we are presently using some like, we're not using any textures on top of it, but eventually when we will move towards retopology and everything, then we will add the textures. At that time those things will be quite visible. And right now if you see, I have changed the material, and see, this material is giving a better preview of all those wrinkles. And of course the pattern over here, these wrinkles and these wrinkles are not same, and that is intentional. I don't want both of them to feel like a symmetry, so I'm happy with it. But still now there is no power backup, there is no power in my area. I'm still running on inverter. I have to, like, I don't know for how long I can continue this. I have to eventually end the stream. Shit, I thought I had planned to continue this stream till midnight, but maybe I will come back after the power comes back. But for now I have to end it soon. Probably I will keep doing it and the computer will just shut itself down in front of me and the stream will automatically be over.
So yeah, and I could have done all those details easily and automatically with the help of marvelous designer, but then what's the fun in that? You need to enjoy. For a commercial project or a paid gig, it's okay, you use those tools to get things done quickly, but this is my personal project. I'm doing it to enjoy it a bit. So this is how I enjoy my life, by sculpting things manually, which could have can be done easily through simulation. We are odd people. Okay, again we have two viewers. Let me add few of my wrinkles in this area as well. I am using 10 million, that's why I could not smooth out that part the way I wanted to. Okay, I don't know, maybe I have to check the wireframe in this region. Oh, that is why it is creating those weird effects, but that's okay. Sometimes cloths do fold like this unevenly. But one thing I have to keep in mind, that is I cannot leave these parts like this. I have to make them a little bit more sharp. See, we made them sharp. Cool. Okay, we have something to work on, and I think I will use my trim dynamic brush in this part and make it a bit flat.
What just happened? Let me try that once more. I think I want this portion to be a bit pointy like this, and then I will smooth this out, and it should give me a decent output. Now I have to maintain this kind of details on this portion as well. I'll take my clay build-up. I'll make the size way smaller, and I will continue doing what I was doing just previously. Yeah. Okay. Let me just pull this out a little. Smooth out. Now again continue that exact process over here, and then of course smooth out the entire thing, and it will give a cloth like feeling. And yeah, but I need some more in this region. This region is going quite flat, which I don't want. Now let me check. Yeah, yep, I have some details. You know the funny part, basically everything which I'm doing in this region won't be visible. That will be covered with the coat. Still I am doing this as like I want to create some beauty renders without the coat. Like I want to create a work cycle for this character, where the character will just hold the coat in his hand like this, or maybe will hang the cloth on the like will hang the coat on his shoulder and will work in a serious way towards his target. I want to do those kind of animations with this character, so that is the main reason why I am working on these wrinkles. Otherwise I could have easily avoided them, but it's like I love to work this. That is the main purpose of it. I love to work on things like this. I love to work on detailed part without worrying about how long it's gonna take. By the way, okay, great. I'm really sorry about the sound. I can't help it. My room is very next to the road. मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? Hello. You wanna join? By the way, let me confirm this. I am not 100% sure about this, but most probably you were Ayush, right? Hello. Yeah, by the तुम्ही आयुष थे ना?
हाँ हाँ हाँ. Got it. ओके, तो मेरा कुछ क्वेश्चन था. Okay, you ठीक है, can ask me. तो By the way, guys, let तो me. Can you turn on your camera? Then people can actually see you. ओके, मेरा बैकग्राउंड बहुत गंदा है. ठीक है, ऑन करता हूँ. Really, उससे फर्क नहीं पड़ता. Turn on the camera. ओके. Just show your face. Then give me some time. I have to adjust the streaming settings. Just a moment. ओके. ओके. Okay, so you are there. I have to bring you a bit closer. I'm sorry about that. Let me check that one. Just a moment. Huh? So you are live now, but your back, like, people cannot see your face properly. That's okay, but still you are live. You can check it from any other screen if you have any. By the way, guys, let me introduce him. He is Mahadev. He is also a 3D artist, and he and Shumit, both of them stays at the same flat. Both of them work at the same institute. He is a teacher as well, and he's here to ask few of his questions and clear some doubts. So yeah, go ahead, brother. Hello everyone. Yes, I think people can hear you. It's, you don't have to greet them like this. It's not that formal. ठीक है. ओके, तो मेरा जो क्वेश्चन था बेसिकली, मैं रॉ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ठीक है, मैं अभी तक कंफ्यूज्ड हूँ, मतलब एकदम सच बात बोल रहा हूँ. ओके. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, ये फ्रेंडली स्ट्रीम है, कुछ भी पूछ सकते हो. योर फ्रेंडली नेबरहुड 3D आर्टिस्ट. ओके, तो मेरा जो क्वेश्चन है, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ एआई को लेके. तो आपको शायद पहले भी बोल चुका था, क्वेश्चन किया था आपको भी, पहले पूछा था. तो मैं अभी तक किस फील्ड में जाऊँ, मतलब प्रॉपर फोकस्ड दूँ किस फील्ड में, तो वो अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ. क्योंकि मेरा जो है ना, अभी फुल कंफ्यूज हूँ मैं. तो मेरे पास अभी तक जो है, जो डिपार्टमेंट है, जैसे अनरियल इंजन पे मैं कुछ कर सकता है, जो मेटा ह्यूमन के ऊपर जो कर सकता हूँ, ऐसा कुछ एनिमेशन एंड रिगिंग एंड कॉम्पोजिटिंग म्यूक बाय एफएक्स हुडिनी. बट मेरे पास जो प्रॉब्लम है, एफएक्स हुडिनी में मैं अभी तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट है. सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है अभी इंतजाम नहीं कर पाएंगे सिस्टम जो रिक्वायरमेंट है, तो हुडिनी को अभी कैंसिल कर रहा हूँ. Well, technically you don't need that heavy system to learn Houdini. You can do Houdini without having 128 GB of DDR5 RAM and all those things. मेरे पास भी जो RAM है, that is 32 GB and DDR4 with 300 megahertz, sorry 3000 megahertz. बट द थिंग इज़ दैट हुडिनी में जो चीज़ें, जिसके लिए हुडिनी पॉपुलर है, जो हुडिनी आर्टिस्ट जो सब चीज़ें दिखा के फ्लेक्स करता है, दोज थिंग्स रिक्वायर्स दोज हाई अमाउंट ऑफ processing power of your system. But you can do procedural modeling in Houdini, and ये system requirements, मतलब you don't need a high system configuration for that. Then you can actually make interactive music visualization, like interactive music, motion graphics, all those things can be done in Houdini without the 128 GB RAM and all those things. So it is possible, but yes, Houdini is extremely tough. I'm learning it, so I can say it. It's extremely tough. You have to learn Vex, you have to learn
lots of expression. So yes, it is tough, and it will probably, for me, I have estimated that it will probably take me around 2 years to fully complete a Houdini showreel. So that is the thing. And when it comes to nuke, I think Sumit can answer that way better than I can. And yeah, rest continue. Okay. एक मिनट, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, एक मिनट. Audio. Hello. I think I'm audible. हाँ. You check my audio through Discord. My streaming audio, if you try to watch this on YouTube, there will be a huge delay over there. So try to stick to Discord for the audio. Okay, okay. And let me also reduce this volume a bit. I have reduced the background music volume. Okay. Okay. तो अभी नेक्स्ट जो है, मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? ऑडियो एकदम क्लियर है. ओके. तो नेक्स्ट जो है, ठीक है, न्यूक जो है वो सुमित जी के पास मैं एक बार जो है ना डिस्कस कर लूँगा. और जो है एनिमेशन एंड रिगिंग. यस, एनिमेशन एंड तो रिगिंग. इसको लेके मेरा जो डाउट है, बेसिकली डाउट है एआई को लेके. एनिमेशन एंड रिगिंग जो है, इसके ऊपर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे जाके एआई के ऊपर कुछ हो सकते जो रिप्लेस, बेसिकली मेरा ये हर टाइम में घूमता है, रिप्लेस हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन आपको पूछना था. टेक्निकली एआई अभी भी एनिमेटर्स को रिप्लेस कर रहा है. Like I don't remember the name of the tool, but there is a tool out there which can generate motion capture data with a single prompt. Like you can prompt it and it will generate a skeleton for you with motion capture data on it that you can transfer to your rig in Maya or Blender. Like that animation can be transferred, so it is already there. So motion capture the things which will be produced with the help of that prompt, those are realistic motion. And also we cannot compete with Weta FX or ILM. They have really huge setup for motion captures, like they wear those expensive motion capture suit, and they have big motion capture studio on all those things. So I think where we can actually excel is if we try to create stylized animation, like have our own personal touch to it. So that is the reason I am also making my animation showreel, but I am avoiding any realistic and all those things. I am trying to make it full cartoony or game type of thing, like doing a lot of weird combat movement and all those things. Those things cannot be motion captured, and I don't think AI can generate them that accurately. So for those requirement, like suppose a superhero character, a game's main character have some special move, those things, and that move is quite stylized, those things will require manual work, and we need animators for that. So that is like, and rigging and animation both go side by side. Like if you are going into animation, you have to learn rigging, but if you can focus on one thing, like you can be a great animator, like animation is a main priority, but you also do rigging. You can go in that direction and you can also go in other direction where you are actually a technical artist who does rigging mainly, but who can also animate from time to time just to test his rig. So you have to focus on either, you have to one strong skill, either animation or rigging, and other skill will complement the other. So that is like what standard procedure I will follow if as I'm trying to make my animation showreel, I'm also making my rigging showreel side by side. So that is the thing. और एक चीज जो है,
अनरियल इंजन लेके, मतलब Yes, Unreal Engine. Unreal में Engine मेरा is must. बहुत Whatever you do, with either you are going for animation or you are trying to stick with modeling itself. Whatever you do, you have to learn Unreal. Unreal is must. You have to learn Unreal. That is the future for real-time rendering, and we need real-time rendering to compete with AI. Unreal is not Okay. optional. That is necessity. ओके, तो ये नेसेसिटी है, मस्ट। और अनरियल इंजन में ऐसा कुछ जो है आपका, इसका भी सिस्टम मैंने एक्चुअली चैटजीपीटी किया था, तो उसमें बोल रहा था मतलब इसका भी सिस्टम रिक्वायरमेंट हाई कॉन्फ़िगरेशन जो है। That depends on चाहिए। how big तो of वही a scene you are making. But Unreal Engine से लोग product visualization का render बना रहे, that does not require heavy specs for your computer. फिर you can create smaller scenes, but if you're planning to create a huge scene with lots of details and activate ray tracing and all those things, फिर उसके लिए you need a bit beefier GPU. But mostly अभी हम लोग का जो GPU, Okay. like I have a 2080, what GPU you are using at present? ओके, तो और एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे मैं प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन के ऊपर आगे बढ़ूँ, तो इसका स्कोप कैसे है, मतलब कितना स्कोप है? Product visualization is the easiest way to make money as a 3D artist. Period. Product visualization is the easiest way to make money. Most of the money I earn is through product visualization. ओके, तो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन पे मेन फोकस तो मॉडलिंग के ऊपर देना पड़ेगा, बाकी तो लाइटिंग। Well, actually there are two department where I focus is, मेरा focus रहता है to create accurate models for the product for which we are making the visualization or the ad, and then I pass. एक मिनट Yes. इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, बोल। So product visualization में you have two departments basically. There could be multiple, but basically दो होता है. Where I focus in, that is creating the asset. जो मेरा last दिन भी मैं जो YouTube में वीडियो अपलोड किया था, that speaker modeling. So you can focus on creating the asset, the actual product and its texture. Then you can pass on that model to the guy who will handle the animation and bit of motion graphics side of it. So that is the basic requirement. Some guy will do the 3D motion graphics on to your product. Then you can actually make a basic product visualization shot. क्योंकि product visualization shot में basic animation and motion graphics रहता ही है. Then if you want to push it even further, then you can add effects to it. Then there is requirement for a Houdini artist. Then you can even push it, you can increase the production quality even further. Then for that you will need some sound guy to compose music or according to the effects you are going for. Then you can also use live action shot onto that. Then you can bring in the compositor, and all those things can be done. But the basic is someone needs to model that product accurately. Then someone will do some kind of motion graphics kind of animation with that product, or you can also do some clean 360 render, that can be also done. And one more thing that is important, if you are going for the product visualization path, if you want to create those product assets very accurately, then apart from Maya, Blender, C4D and 3ds Max, you should learn any CAD software like Fusion 360 or Rhino. So for a really long time I am planning to learn this Rhino thing.
but I have not succeeded yet, though I will eventually learn that. But right now I'm focusing more on animation and rigging, as I see that is there are more scopes in animation and rigging for now. And also I am actually doing this product modeling and asset creation thing for a really long time, so I really want to switch a bit for a better taste. ओके, मतलब आपको ऐसा, मतलब आप बोल रहे हो जो है मॉडलिंग, सॉरी, रिगिंग एंड एनिमेशन पे ज़्यादा स्कोप है? No, if it is kind of similar, like अभी rigging and animation में भी जितना scope है, and if you actually learn Fusion 360 or that what do you call that, Fusion 360 Rhino, and if you can combine that with some architecture visualization thing, like architecture visualization also comes under 3D visualization. It is like it is under a same bracket of 3D visualization. Then under that we have architecture visualization and product visualization. So if you learn Rhino, Fusion 360 and SketchUp along with some render like Unreal and D5, then you are a perfect candidate for 3D visualization. And there are a lot of jobs opening for 3D visualization, and they are looking for architecture, especially there is more requirement for architecture visualization role. But I personally hate 3ds Max. But if you want to excel in architecture visualization, then you have to master SketchUp, 3ds Max, those are must. Then you have to learn V-Ray for rendering, and D5 render as well, D5 Lumen. Those are the renders which architecture visualization artists usually use. Then of course now for real time and fast preview you use Unreal Engine. So that is the package for architecture visualization, and there are a lot of scopes in architecture visualization. But me personally, I don't like architecture visualization, so I am not going in that route. I am happy with product and character, and now I am shifting to rigging and animation, though I think maybe there are more scopes in architecture visualization than in rigging and animation, as how I see the job market right now. ओके, और यहाँ पर जो है, मेरे को बेसिकली पर्सनली, आपको पहले भी पता है, मैंने पहले एनिमेशन करता था, मतलब मेरे को एनिमेशन ज़्यादा अच्छा लगता है. But the thing is that animation will take you a really long time to perfect, like वो master quality लाने में, like to achieve that subtle nuances in your acting shots, animation acting shots, to get those high the combat movement in animation for body mechanic shots. That will take, like it will take around 2 years to master it fully. Not then in 2 years also you can't really master it fully, but you will be in such a stage where you can comfortably handle few complex shots. But if you talk about architecture visualization, your portfolio will be ready within 6 months. You can be job ready within 6 months, and it is like the learning curve is not that steep, and there is a cap to it. Like after a certain point you don't have to focus on learning, then you can focus on earning. But if you go in animation route, then you have to keep learning, keep improving, keep your it is basically a performance, right? So you have to invent or find a way to give better performance every day. So that is the difference. As it is a performing, animation is basically a performing art, so you have to keep yourself going to perform in a different way in the next project. But when it comes to architecture visualization, you will probably within 6 months you will have a lot of assets already at your disposal. You will probably use those assets to create new scenes and hardly model anything new, and then it's matter of more rendering. For materials also, you don't have to create those textures. You will find a lot of materials for architecture purpose. You can just simply drag and drop them. It is very easy to have a good showreel in architecture visualization, and that is the only reason I don't like architecture visualization, as the learning curve is way too smooth. So I don't enjoy it. और जो है मेरा
अनरियल इंजन पे मेरा और भी एक है जो है मेटा ह्यूमन। मैं सोच रहा था मेटा ह्यूमन, ये बहुत दिन पहले ही सोच रहा था, मतलब 1 साल पहले मैंने इस मतलब जॉब ज्वाइन करने से पहले मेरा प्लान है ऐसा कुछ था, जो है मेटा ह्यूमन के ऊपर कुछ शॉर्ट फिल्म बनाए जो फुल टाइम के लिए यूट्यूब में ऐसा कुछ क्रिएट करे मेटा यस, ह्यूमन के ऊपर। यस, वो तो चीज़ हो सकता है, वो but हाँ that there is a catch to it. MetaHuman से what he was saying is I have done that in my last company, though that never went into production, but हम लोग ने टेस्टिंग कर रखा था उसका. You are basically talking about the live link app जिससे हम लोग VTubing कर सकते हैं वर्चुअल अवतार लेके. But the thing is that if you try to do that in YouTube, then probably, especially in India, you will get a certain kind of reach, like audience will be interested in seeing that, as India में ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं VTubing, but the outside market like foreign में that VTubing thing is way too much saturated. लोग literally सिर्फ iPhone में सीमित नहीं है, they are actually buying motion capture Rococo suit for themselves and performing by wearing that Rococo suit in front of the camera, and like they are full on going into full on production. So बाहर full saturated है, but in India it is not yet that much saturated, so there is a scope in that. But I feel like if you want to do that, then MetaHuman is not like, I would not prefer to use MetaHuman, as it gives a certain kind of look, like people just stare at your model for, like, look at your model for 2 seconds and can say that it is MetaHuman, it is that much common. So there is no special USP to it, but you can actually create those performance, like I can create that performance with this character also, but there are 52 blend shapes which I have to create for this character. Those are called AR Apple AR blend shape kit or something like that. There are 52 of them. If you create those 52 blend shapes, then you can easily do your facial capture tracking with your iPhone and apply those on this character, and rest can be done. So for VTubing you can start with a MetaHuman, but then after some time you should actually build a custom character just like this, which what I am doing right now. Eventually I will also make those 52 blend shapes for this character, but I am not planning to make any, I'm not planning to use this character for VTubing, though those 52 blend shapes will be made for this, as well as I am working on my rigging showreel. So for rigging showreel you need to have those blend shapes. So that is the thing. okay. But I personally hate MetaHuman, as like I hate everything which is easily accessible. Grind for it बेटा. If you अगर सोना रास्ते में पड़ा होगा तो सोने का वैल्यू क्या है, उसके लिए खोदो, जमीन खोद के नीचे जाओ खदान में, फिर ना सोने का वैल्यू है. रास्ते में पड़ा हुआ है, क्या वैल्यू है उसका. वो तो है, बट मेरे को अभी जो है, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ. मेरे को अभी जो है बहुत जल्दी कुछ डिसाइड करना पड़ेगा. जो if you want to switch quickly, go for architecture. If you want to switch quickly, go for architecture visualization. Pick up V-Ray and 3ds Max. Pick V-Ray and 3ds Max. उससे showreel बना लो. Start applying for architecture visualization role. In the meantime, master Sketchfab and SketchUp and R5 render. Then you will update your showreel as you learn that, but you can easily get a job with 3ds Max and V-Ray. And there are a lot of opening for architecture visualization. But if you love to animate, then after getting that job, try to master your animation skills, then eventually switch to animation. ओके. मेरे को एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट था एनिमेशन में जाने का, और जो है मूवी में, ये तो सबका ही मूवी तो उसमें एज एनिमेटर काम करने का. बट yes that is the thing. मेरा भी जो टारगेट है that is मूवी, तो इसीलिए I am also focusing on animation and rigging showreel, and also making my Houdini showreel. So Houdini, animation and rigging will give you the highest chance to work in a big production house
and work on big budget films, but architecture will get you a job the fastest. ओके, अगर मैं ऐसा सोच रहा था, अभी जो जॉब कर रहा हूँ इसके साथ ही मैं कंटिन्यू करूँ, साइड बाय साइड लर्निंग जो है ना प्रोसेस करूँ यहाँ पर रिगिंग एंड एनिमेशन के ऊपर, तो इस वे में आपको क्या लग रहा है, आपका क्या सजेशन रहेगा, मतलब सही है? सही है, यू कैन कंटिन्यू विद दिस जॉब, बट यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स. जॉब से सुबह जाकर शाम को आके भी पूरा रात बैठ के यू हैव टू do the animation. But and I would suggest, before you go for rigging, you go with animation. Like why I'm saying this is, in most of the institutes the course is structured in such a way that they teach us rigging first. They teach their students rigging first, then they teach animation. But I believe that first a student should learn animation. They will learn to use the puppet, and they will use different kind of rig puppet for doing those animation. Then they will get a feel of it, how a proper rigged character should feel, and what is a good rig. Then eventually they will learn rigging and start making their own rigs for animation. So it's like, first you learn to drive a car, then you get better at this, then you learn how to modify your car according to your own specific need. Then eventually, if you wish to push it even further, then you can actually build your own car, if you wish to go that far. Okay, so fast process animation learning, then rigging. But by the way, I am only saying my personal thoughts, and it is live, so people can judge me for my opinion. It is for my opinion, and I'm saying this to my friend, so you can have your own opinion and share that with your own friend. I am not interfering with your opinions, so let me keep my opinion. Don't really get upset about this thing. We all have our different opinions. नहीं, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो आपका एक्सपीरियंस से मेरा भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो रहा है। ये जो क्वेश्चन का मेरा दिमाग में मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, we just assume we have experience. मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है. Like I also do a lot of fuck ups, then I learn from them. Previous year I went into that company which I don't want to name, as you know the reason. So yeah, I do a lot of fuck ups. बट आपका नॉलेज इस फील्ड में तो मेरे से तो बहुत ज़्यादा ही है, तो उस नॉलेज को मैं थोड़ा जो है ना हेल्प ले रहा हूँ आपसे, उस नॉलेज से जो है, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा ही but the best advice I can give is stop making notes. Like you have made, I'm seeing that you are making notes, that is fine, but the first thing like you need to do is just forget everything. Pick one thing. Like if you're feeling like animation, then go for it. Start animating every day for 2 hours straight. Start learning it or practicing it, do whatever it takes. Animate for 2 hours straight. Go for it. If you want to pick architecture visualization, don't do that much of research. You know how long it took me and Sumit to convince each other that we should go live on YouTube. But right now, after doing it for one time, now I am doing it regularly. So it's like that. Once you get the hang of it, you come into that flow mode. So just do it. If you find it difficult to pick from architecture or animation or rigging or FX, just put all those keywords to ChatGPT and ask him to pick a word for you. Or you can do that in Google as well. Just get the result, whatever it picks for you, stick to it, put in hours, do 3 to 4 hours or minimum 2 to 4 hours of practice of that skill for straight 2 months. Then you decide what you want to do, if you want to continue this or you want to switch to any other skill. There is no loss. Like you will eventually master, you will eventually gain some skill, right? right. ओके, अभी मेरा लास्ट 4-5 दिन जो गुजरा,
मतलब बहुत गंदा, मतलब बहुत ज़्यादा ही गंदा, मतलब मैं फुल कंफ्यूज्ड होके मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। इस फिल्म एक बार इसको देख रहा हूँ, एक बार उसको देख रहा हूँ। कभी कभी मैं ना जो ज़्यादा ओवर थिंक करके कभी हुडीनी को लेके बैठ रहा हूँ, नहीं, कभी मेरा तो रूटीन रहता है। मतलब फुल डाइवर्ट। सी आई हैव अ रूटीन. I don't overthink. I picked up the topics which I like my animation, Blender rigging, Houdini, my animation. So it is divided. Like पूरा हफ्ता वो बना हुआ है. I don't overthink now. I overthink one day. I thought for like 2 to 3 hours. Then I pointed out. I made this list. Now I just blindly follow it like a horse with those blinds on. I I don't see outside. I have a blinds on. I just go straight. ओके, अभी अभी मेरे को जितना फास्ट हो सकता है इस चीज से बाहर निकल के आके मेरे को काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब एक वन वे में काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी जो बोला है आपने, अभी जो बोल रहे थे ब्लाइंड हो You एक can में लग जाओ, you वो you वाला know काम करो। this is the best thing, like what I am doing right now. You know why I am live at this moment? I'm making a character for my own personal portfolio. I can also do this personally without being live, but I am going live and doing it in front of everyone, so there is a kind of social commitment on me. Like people are watching, so I cannot leave midway. I have to come live every day. That helps that YouTube algorithm will be pushed if I do that. And once you start doing it, then you get into that zone. So I would suggest you also come live. I will join your channel as a guest, like you are a guest in my channel right now. So come to live, speak to the camera, say whatever the hell you want to. No one is there to judge you. You say directly that I am learning this skill, I am not good at it, but I am sharing my learning process with everyone. So here is the screen, you can see it what I'm doing. That's it. There is a social commitment. People will watch. Like right now there are 3 people watching us, talking about our own life, and that's fun. Like at least I am accountable to those 3 viewers, right? राइट राइट राइट। मेरा एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, एक टाइम था मैं मतलब कैमरा के सामने उतना डर नहीं लगता था, तो अभी जो है ना, अभी मेरे को कैमरा के सामने You are right बहुत now. ज्यादा ही डर Right लगता है। now अभी you are जो live. इतना कुछ कर रहा हूँ। Right now you are live in front of the camera. राइट 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 राइट, अभी तो डर डर के मैं बात कर रहा हूँ ना, मतलब उतना ओपनली नहीं हो पा रहा हूँ, डर डर के बात कर रहा हूँ ऐसा। इसके वजह से मेरा भी लाइव मतलब यूट्यूब चैनल क्रिएट करना ये पहले से ठीक हो जाएगा. मैं प्लान स्टे कर ऑन चुका माई हूँ, चैनल. मैं रोज दिन में या तो सुबह या रात को स्ट्रीम करता ही हूँ. स्टे ऑन माई चैनल फॉर a month. You will get used to it, then make your own channel. I will also have a companion to राइट talk राइट to, or else I just give commentary on out of thin air. I try to create topic to give राइट राइट, commentary on. एकदम एकदम एकदम। Then I तो have फिर to actually कंटिन्यू करेंगे। adjust the layout of it. Like right now, the layout of the screen is designed in such a way that there are only space for 2 cameras at the same time for me and Shumi. So now, as you are also going to come from now on, so I have to alter the layout. Probably our face will shrink down a little to accommodate the third face. राइट, तो ठीक है, आप कंटिन्यू करो। Yes, you can stay तब here. तक You can stay मैं here. देख, Like there's हाँ no हाँ issue. हाँ हाँ, राइट। मैंने सोचा था जैसे कुछ ट्यूटोरियल हो गया, अपलोड करेंगे ग्राफिक डिजाइन के ऊपर पूरा जो है।
अपलोड करेंगे। if you नहीं, want तब to से if मैं you सोच want रहा to हूँ एक actually I would love to request you this thing. मेरा graphic design काफ़ी weak हो गया है. Like I obviously started as like that. I did my photography, then went into Photoshop, eventually did a little bit of graphics design, then video editing, then switched to this 3D thing. But while doing so, I'm doing this 3D for a while, but अभी मेरा graphics design काफ़ी weak हो गया है. तो if you would ओके like to share your screen on these live sessions on my channel, as right now you don't have your own channel, and share some of your work live, then I would love to watch that and be a host. Like right now ओके also you can do that. We can switch this video from Zbrush to you demonstrating some graphic design stuff. ओके। तो मेरे को कुछ फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा फाइल जो है, तो मैं एक बार प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर करता हूँ एक आप बोल रहे हो ऐसा कुछ जो है ग्राफिक डिजाइन का कुछ सेशन जो है। हाँ, बेसिकली व्हाट वी यूज टू डू ऑन डिस्कॉर्ड, हम लोग डिस्कॉर्ड में स्क्रीन शेयर करके लोगों को एक दूसरे को दिखाते थे कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, सी दिस इज हाउ आई एम थिंकिंग, वही करना है. बट राइट नाउ वी आर लाइव एंड पब्लिक कैन सी अस, दैट इज द ओनली डिफरेंस. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, लाइक हाउ वी यूज टू डू, लाइक मी एंड Shumit, and you occasionally come. राइट राइट, ओके। तो अभी जो है अभी मैं एक ग्राफिक डिजाइन का कुछ दिखाता हूँ। You want to share? फिर I can. एक मिनट, मेरे को अभी मेरा जो पीसी है इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा डिस्कॉर्ड में, तो इसमें ज्वाइन हो जाता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। तब तक आप करो, मैं कुछ जो है ना। ठीक है, यू नीड टू कलेक्ट दोज एसिड्स एंड ऑल, वो एसिड वगैरह कलेक्ट कर लो. फिर तब तक मैं हूँ, मेरा ये हो भी गया है. आई एम डन विद द शर्ट, एंड लाइव स्ट्रीम का ये शर्ट ही बस दिखाना था. दिस इज डन, एंड राइट नाउ आई एम जस्ट doing it for the sake of doing it. Like I can stop at any given moment and call it done. ओके।
Okay, I was quiet for a really long time. Let me just say what I'm doing. So yeah, I am done with the cloth or the shirt overall. So right now I am just adding few extra details, which, like, if you don't want to add them, then that is also fine. It is not a necessity. These details are like, you can say, what is the cherry on the top kind of thing. Like, the cake is made right now, you are just decorating it with few cherry and all those things. These are that extra cherry on top of it. You can still avoid it, but as I am already into it, so I'm in that flow mode, and flow mode it's tough to get out of the flow mode. So right now I'm continuing doing this. So I think I will not continue any further. I am calling that the shirt is done, just like the hair was done, though there are rooms for improvement. But right now I am done with the shirt, but I think I will work on this middle section a little bit more. Then I'll call the shirt as done. Then I'll switch to the boot, and that will be for another stream. Right now in this stream I will only finish the shirt, then we'll switch to graphics design. And about this button parts, I think instead of making these buttons inside of my ZBrush, I can keep those placeholders for now, and I will switch them to real buttons with a proper button kind of shape when I am doing the retopo of this model, as it is easier to create the button inside Blender or Maya. So I'll skip those buttons for now, but I will make these lines a bit sharp, and then I will call it, like, I will move on from the shirt for now. Then after the shoe is done, then probably I will do another 2-hour session to fine tune everything from hair to shoe. Everything I will fine tune for the one last time before I move to retopo, but that is for maybe tomorrow or day after tomorrow. For now I will finish it by making this line a bit sharper, and then we are switching to graphics design. Mahadev is here to explain that thing to us. Even I will learn. I am also out of touch on this. मैं यहाँ पर कुछ बात बोलना चाहता हूँ। Yes. अगर कुछ गलती हो जाए मेरे से, डोंट माइंड। मैं खुद गलती करता हूँ, मेरे को क्या है। I am not that of a pro. I am learning. Even I am a learner. We are all learners. Right. So I need little bit of space over here. So I'm moving away my reference board. For now I don't have to worry about that, and I think I'm very happy with how things are going. Just like fine for me. तो start करें? Okay, just a moment. Give me 3 minutes. I will just finish with this last stroke. Then we will switch to graphics designing. Okay. And also we have to configure the screen and all. That will take some time for us to configure it. Like, we need to share your display and not mine. Right. So just a moment. Okay. I have this thing, and let me take my trim dynamic brush. Let's polish this part a little bit more. And I think we are actually done with the shirt. Okay, I am calling it a day. The shirt is done. Let me put the tie back on, and we are done. So this is the, let me save it once. So this is the update. So for the character's shirt is done. Now in the next stream we will
further work on this character. Now for a change, let us switch back to graphic designing, where Mahadev will explain some interesting stuff to us. And for that, though the title of the live says that it is about Zbrush, but now things gonna change a little, and I hope you guys will cooperate. And let me now figure out how I'm gonna bring Mahadev's screen onto this display, and let me figure it out. Okay, so it is my face is here, so I bring that over there only. Just a moment. How do I do that? Mahadev, share your screen on Discord. Let me see what can be done. Okay. Are you sharing? Okay, so you are sharing. Yes. Okay, so it is my face is here, so I bring that over there only. Okay, I am seeing my own voice. I don't know from where the echo is coming. How do I do that? Mahadev, share your screen on Discord. Let me see what can be done. Okay, I think Mahadev, you should mute the live stream if you are viewing it at present. हाँ म्यूट ही है. Live stream mute है ना? हाँ. Okay, now I don't see any echo, so now it's perfect. You can continue with your presentation. So Mahadev's screen is not visible at present, as I was not ready for this configuration. We'll figure something out in the next stream, but for now his screen is visible, just his face is not visible. So Mahadev, you can continue with your presentation. Okay, मेरा screen properly visible हो रहा है ना? Yes, your screen is properly visible. I'll just maximize it. I don't know from where the echo is coming. Okay. तो आज basically हम एक basic poster design देखेंगे. So what are you actually gonna explain? Mute the live stream if you are viewing it at present. Mahadev, I'm seeing a lot of I'm getting a lot of echo right now. Okay, now I don't see any echo, so now it's perfect. You can अभी clear आ रहा है? Continue with your presentation. I don't know, I'm seeing. Hello. Yes. So Mahadev's screen is not visible at present, as I clear आ रहा है? not let me do one. Go for I'm showing you something right now. Yes, you turn off that. Okay. हाँ. Yes. मेरा जो है ना ये स्पीकर की वजह से भी हो सकता है क्योंकि No, अभी ठीक है. You can share your screen. Now there was no echo after you turned off that stream. Now we don't have any echo. Just don't turn on the screen. Turn on the stream or the live stream. Don't turn that on. You can share your screen. That will be fine. Okay. अभी सही आ रहा है? I don't hear any echo, so it is perfect. Okay, echo तो नहीं हो रहा है ना? नहीं अभी echo नहीं हो रहा है. Okay. तो हम एक पोस्टर डिजाइन देखेंगे जो स्टारबक्स का है. Okay, so we are using Photoshop, right? हाँ, right. Okay. तो यहाँ पर उसको क्रिएट करेंगे. तो फर्स्ट हम लोग जो है यहाँ पर बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे. यहाँ पर थोड़ा ग्रीन टोन में रखेंगे कलर बैकग्राउंड. तो यहाँ पर इतना सा ये सही है. ओके, तो हम लोगों का जो है ये फोरग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है. तो फोरग्राउंड कलर जो है इसका एक शॉर्टकट किया आता है जो आपका ये हम लोगों का कैनवस, इसको हम लोग कैनवस बोलते हैं. तो ये कैनवस का जो है फोरग्राउंड कलर से फिल हो जाएगा. अब अलग प्रोसेस भी है इसका, ऑल्टरनेटिव प्रोसेस भी है फिल करने का. तो शॉर्टकट की यही है. तो इसका एक शॉर्टकट की आता है जो है
ऑल्ट बैक स्पेस, और बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं है, बैकग्राउंड आपको जो है लेयर पैनल जो है यहाँ पर बैकग्राउंड को पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आपको जो है शॉर्टकट अनलॉक, की प्रेस पहले करना पड़ेगा। अनलॉक तो कर, अनलॉक, अनलॉक नहीं अनलॉक नहीं अच्छा, करना यू डोंट पड़ेगा, नीड टू वो अनलॉक ऐसे ही इट। फिल हो जाएगा। ओके, तो ये So फिल हो गया basically हम you लोग का। select अभी the के लिए layer. ये टेक्स्ट मेरे को डालना है। So basically you selected हाँ, that layer, then सिलेक्ट द you लेयर, used a shortcut key to fill the foreground color onto the ऑल्ट, layer. हाँ So that is Alt and हाँ, backspace. बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, Okay, got it. ठीक है। तो अभी मेरे को एक टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट वाला जो लेयर है इसको अभी के लिए हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पोस्टर जो हम बनाएंगे उसमें ये टेक्स्ट ऐड करना है, तो इसको हम पहले से जो है टेक्स्ट को ऐड करके रखा है, तो अभी के लिए ज़रूरत नहीं है इसका, तो अभी के लिए इसको हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आई बटन आ रहे हैं इसके थ्रू हम लोग हाइड अनहाइड कर सकते हैं, Okay. ठीक है। तो अरे मेरा जो है ना, पढ़ाता हूँ तो इसलिए मेरा पैटर्न भी ऐसा ही हो गया पढ़ाने जैसा, तो मैं सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, Auto people will pilot हो enjoy गया। this. People will actually enjoy this. तो यहाँ पर कुछ इमेज लेना है मेरे को, स्टारबक्स का जो कप होता है उसको इमेज लेना है। तो पहले मेरे को जो है पीएनजी नहीं मिला है, तो मैं एक इमेज मिला है इस एंगल वाइज जो मेरे को बनाना है, तो उस इमेज को हम लोग पीएनजी यहाँ से बना लेंगे, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कैसे पीएनजी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ओपन करके ये मेरा इमेज है, तो यहाँ पर ओपन करके लेके जाएंगे, फिर Okay. लेके जाके यहाँ पर So I have a question. Before actually placing that logo or extracting the logo, we actually also have to fix the perspective, right? राइट, Yes. I पहले really आपको, forgot how to do जो है that. ना, It would be nice if you show me that thing. Like मैं भूल चुका था ओके, perspective. पहले Continue. सॉरी, और एक बार बताओ। हाँ और एक बार बताओ वही क्या बोल रहे थे आप? पर्सपेक्टिव जो फिक्स करना पड़ेगा ना, वो मैं भूल चुका हूँ। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग इट अगेन, सो कंटिन्यू। ओके, एक्चुअली मेरे को जो पर्सपेक्टिव में चाहिए वो पर्सपेक्टिव में नहीं मिला, मतलब लगभग यहाँ पर आपका 60 to 65% मैच हो रहा है, इसलिए इस इमेज को डाउनलोड किया। यहाँ पर मेरे को पर्सपेक्टिव चाहिए था जो है ये वाला जो काफ है, काफ थोड़ा टिल्ट होके, मतलब 90 डिग्री टिल्ट होके इसका जो बैक वाला जो फेस है, ये फेस देखना चाहिए था मेरे को, ये वाला एंगल चाहिए था। मतलब अभी तो ये फ्रंट एंगल पे है ना, मतलब फ्रंट कैमरा पे है, ये थोड़ा डाउन एंगल पे होगा तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा होता, बट वो मिला नहीं मेरे को, तो इसलिए जल्दी करके इसको ही डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो अभी जो है मेरे को यहाँ पर इसको सिलेक्शन करके काट आउट निकालना पड़ेगा पीएनजी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग बैकग्राउंड को कॉपी करेंगे, बैकग्राउंड कॉपी नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर पहले जो टूल बार पैनल है, टूल बार पैनल में जाके क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन आता है, तो सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कुछ पार्ट जो है सिलेक्ट कर लेगा, पूरा डिटेल में तो नहीं करेगा, बट जितना करेगा वो तो टाइम सेविंग के लिए अच्छा है, बाकी जो नहीं कर रहा है उसको हम लोग मैनुअली कर लेंगे क्विक सिलेक्शन टूल के थ्रू, ठीक है। तो कंट्रोल होल्ड करके मैं स्क्रॉल बार जो है, स्क्रॉल बार को अप एंड डाउन करेंगे तो जूम इन जूम आउट होता है, जो फोटोशॉप का कैनवास है वो जूम इन जूम आउट होता है, तो वही कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल होल्ड करके इसको जूम इन कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैं सिलेक्शन जो क्विक सिलेक्शन टूल है इसके थ्रू मैं इसको ड्रैग करके, यहाँ पर जो है ऑल्ट होल्ड करके करेंगे तो ये अंदर के तरफ जाएगा, बेसिकली सब्सट्रैक्ट होगा। और शिफ्ट होल्ड करेंगे, अगर शिफ्ट होल्ड नहीं भी करोगे तो भी ये जो प्लस साइन आ रहा है इसके थ्रू ड्रैग करेंगे तो ऐड होता जाएगा, ऐड टू सिलेक्शन हो। तो मैं ऑल्ट होल्ड करके इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं कभी कभी दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चला जाता हूँ, ये मेरा बहुत ज़्यादा गंदा आदत है। तो we have the selection कंप्लीट है। हाँ सॉरी, क्या बोल so we have the selection now, right?
हाँ, तो अभी मेरा जो है काफ सिलेक्ट हो गया। अभी ये जो है ना, इसको हम कंट्रोल जे प्रेस करके कट आउट निकालेंगे। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। अभी इसको कट आउट निकालेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ कभी कभी ये जो है ना एज प्रॉपरली नहीं आता है, जैसे इसमें आ गया फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज को रिफाइन करने के लिए हम कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ, अनडू कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लेंगे, ये प्रॉब्लम आ रहा था तो इसको सही से कर लेंगे। और एज को रिफाइन करने के लिए और भी एक प्रोसेस है जो है सिलेक्ट एंड मास्क। इसमें जाके भी आप एज को रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल्ट होल्ड करके यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है, इनफ। तो इसके बाद मैं सिलेक्ट एंड मास्क पे जाऊंगा। सिलेक्ट एंड मास्क पे जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाने के बाद यहाँ पर आप जो है व्यू पैनल है, यहाँ पर जाके आप बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, ओवरले, ऑन ब्लैक, ऑन वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ये सब कुछ मिल जाता है। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यहाँ पर ओवरले पे जो है काम करना, तो मैं ओवरले पे ही रखता हूँ अभी। और कलर जो है वो अपने मर्जी से यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, जो भी कलर चाहिए यहाँ पर ह्यू जाके चेंज करके जो भी कलर चाहिए चूज कर सकते हो। अभी मैं कलर कैसे चूज करता हूँ, यहाँ पर जैसे मेरा ये जो इमेज है, मतलब जो कटआउट मैंने निकाल रहा हूँ अभी, तो इसका कलर व्हाइट है। तो इसको प्रोमिनेंट देखने के लिए, मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखने के लिए यहाँ पर मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट किया। अभी इसका कलर अगर ब्लैक होता तो मैं बैकग्राउंड का कलर व्हाइट रखता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को मेन जो इमेज है इसका एज मेरे को अच्छे से देखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर एज रिफाइन करने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक को ही रख रहा हूँ अभी। यहाँ पर जो रेडियस है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, स्मार्ट रेडियस को ऑन करेंगे और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो आपका यहाँ पर एज है, कंट्रोल प्लस जो बटन है उसको प्रेस कर रहा हूँ, फिर जो है जूम इन जूम आउट होगा। ये भी ऑल्टरनेटिव है, पहले मैं बोला था कंट्रोल और स्क्रॉल बार अप एंड डाउन, ये भी एक ऑल्टरनेटिव है। कंट्रोल प्लस एंड माइनस से जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेडियस को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो रेडियस को इंक्रीज करने के टाइम में यहाँ पर जो मेरा हार्ड एज शो हो रहा था, ये अभी इसको इंक्रीज करेंगे तो ये देखो थोड़ा बहुत जो है स्मूथ होगा। तो मैं उतना तो नहीं अप्लाई करूँगा इसके ऊपर, थोड़ा सा 4 सही है, 4 पिक्सल तक रखेंगे, px तक। फिर स्मूथ को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। देखो एज थोड़ा सॉफ्टली ब्लेंड हो रहा है, मतलब सॉफ्ट हो रहा है बेसिकली। अभी यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद शिफ्ट एज को मैं थोड़ा सा डिक्रीज करके देखूंगा। बेसिकली आपको चेक करके देखना पड़ेगा आउटपुट जो है यहाँ पर वो कितना अच्छा आ रहा है और कितना बुरा आ रहा है। तो जो जिसमें अच्छा आ रहा है उसको आप रखो, बाकी नहीं आ रहा है तो उसको मत रखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट एज को अगर इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर वाइट एज आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन कर देंगे, बस इतना सा, ठीक है। फिर जो है इस पर ओके कर लूँगा, तो ये स्टेट हो जाएगा मेरा कंट्रोल। फिर इसके बाद मेरे को कंट्रोल जे प्रेस करना है तो कट आउट मेरा निकल जाएगा। कट आउट निकल गया। अभी इसको इस वाले जो लेयर है ये ऑब्वियसली सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब सिलेक्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद मैं इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्लस सी कॉपी किया। अभी इसके बाद यहाँ पर गया, जो मेरा पहले का कैनवस था वहाँ पर गया, मूव टूल में सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल प्लस भी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो गया मेरा। अभी इसके बाद ये तो मेरा पेस्ट हो गया। अभी इसके बाद मेरे को इसके ऊपर एक रेक्टेंगल मेरे को शेप लेना है, ठीक है। आप ऐसे भी करके शेप ले सकते हो, जो है आपका शेप टूल से भी आप शेप ले सकते हो, और आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर मार्की टूल के थ्रू भी आप जो है शेप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो यहाँ पर करूँगा, शेप टूल लेके एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ इतना सा, ठीक है। बट
शेप टूल लेके मैं क्रिएट करूँगा। यहाँ पर न्यू लेयर मेरे को क्रिएट करना है, क्योंकि एक लेयर के ऊपर मेरे को काम नहीं करना है, तो मेरे पास बाद में जाके ऑप्शन नहीं रहता एक लेयर के ऊपर काम करेंगे तो इसलिए मेरे को न्यू लेयर में क्रिएट करके ये, तो फिर ये जो क्रिएट करेंगे ये सेपरेटली लेयर में क्रिएट हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है मेरे पास अलग से एक कंट्रोल आ जाएगा, नहीं तो इसके ऊपर करेंगे तो इसके साथ जो है काप वाला इसके साथ एक साथ मूव होगा बेसिकली। तो अभी इसको मेरे को फील करना है, तो फील करेंगे जो है यहाँ पर फोरग्राउंड कलर, यहाँ पर कलर को मैं चेंज कर लूँगा थोड़ा सा, जो है इससे भी थोड़ा लाइट टोन में रखेंगे, इतना सा लाइट टोन रख लिया। ओके, अभी इसके बाद मेरे को फोरग्राउंड कलर से फिल करना है, तो फोरग्राउंड कलर फिल करने का शॉर्टकट की है ऑल्ट बैकस्पेस। ठीक है, तो ये फिल हो गया ऑल्ट बैकस्पेस से। अभी इसको मेरे को क्या करना है, कंट्रोल+D प्रेस करना है। कंट्रोल+D से क्या होता है, डी सिलेक्ट होता है। ये जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन लेने का मतलब क्या है? सिलेक्शन लेने का मतलब यही है, अभी के लिए ये जो पार्ट, जितना पार्ट मतलब जितना एरिया सिलेक्ट है, अभी के लिए इतना पार्ट ये एक्टिव है। बाहर वाला जो पार्ट है, बाहर वाला पार्ट पूरा डीएक्टिवेट है, अभी के लिए कहीं पर भी काम नहीं करेगा, सिर्फ इसके ऊपर ही काम करेगा। ये सिलेक्ट है मतलब यही एक्टिव है। तो अभी मेरे को इसको कंट्रोल D प्रेस करेंगे, डी सिलेक्ट हो गया। अभी इसको सिलेक्ट करके पोजीशनिंग जो है पोजीशन करेंगे इसको सही से। पोजीशन करने के बाद इसको मैं ऊपर में ड्रैग करके लेके जाऊंगा, लेयर को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरे को ये जो आ रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ तो गलती किया है, इसके ऊपर मेरे को ड्रॉप शैडो डालना है। तो राइट, मैंने गलती किया है। फर्स्ट स्टेप जो किया था मैंने बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर शैडो डालना है। ठीक है, ये वाला जो लेयर है इसके ऊपर मेरे को शैडो डालना है, तो मेरे को सिलेक्ट इनवर्स करना चाहिए था, तो मैंने गलती किया है यहाँ पर। तो मैं इसको एक बार कर लूंगा, कंट्रोल Z प्रेस करूंगा, सिलेक्शन को वापस लेकर आऊंगा, बट सिलेक्शन को तो वापस लेके आया। यहाँ पर मेरा सॉरी, मैंने गलती किया है। यहाँ पर पोजीशन सही से कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा कभी कभी। हेलो प्रसम जी। yep आई एम सीइंग इट। कॉन्फिडेंस लो हो रहा है मेरा। नहीं, इट्स गोइंग ग्रेट, आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट। मैं भी देख रहा था, मैं हमेशा बकबक करके काम करते रहता हूँ, फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली सिटिंग आइडली एंड watching someone do the work. Okay, I could have actually like मैं chat में भी लोगों के साथ बात कर सकता था, but at present we don't have any chat. अभी संडे को रात को 9:30 बजे कौन ही लाइव स्ट्रीम देखेगा। शाम को व्यूइंग था, सबसे ज़्यादा व्यूइंग सुबह था एक्चुअली, तो वही गॉट द परफेक्ट टाइम कि संडे सुबह रहता है व्यू। अच्छा, हाँ, सुबह कितने बजे किया था आपने? देखना पड़ेगा। आई स्टार्टेड अराउंड लाइक 12 बजे, शायद 12 बजे से शायद 2:30 बजे तक किया था। ओके, ठीक है, तो वापस यहाँ पर अगेन स्टार्ट, लेट्स फोकस। पोजीशन जो है मेरा यहाँ पर ऐसे क्रिएट किया, इस पोजीशन मेरा सही लग रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन में मैंने क्रिएट कर लिया। अभी इसके बाद मेरे को क्या करना है, सिलेक्ट इनवर्स करना है। तो सिलेक्ट इनवर्स कैसे करते हैं, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल-Shift-I। ठीक है, तो कंट्रोल-Shift-I प्रेस कर रहा हूँ तो सिलेक्ट इनवर्स हो गया। सिलेक्ट इनवर्स का मतलब क्या है, अभी जो पहले बोल रहा था यहाँ पर सिलेक्ट किया था मतलब ये वाला पार्ट एक्टिव था, बाहर वाला पार्ट डीएक्टिवेट था। अभी सिलेक्ट इनवर्स कर दिया मतलब बाहर वाला पार्ट एक्टिव हो गया, अंदर वाला पार्ट जो है डीएक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पर मेरे को ये सेम कलर मेरे को फिल करना है, ये जो मैंने सिलेक्ट इनवर्स किया इसमें। तो यहाँ पर फिर से जाऊँगा, फिर से जाके मैं इस कलर को सिलेक्ट करूँगा। कलर पिकर पैनल जब ओपन होता है तब यहाँ पर ऐसे आई पिकर पैनल ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। नॉर्मल यहाँ पर जाके जैसे सिलेक्ट मतलब क्लिक करोगे तो ये जो है वो कलर पिक कर लेगा।
अभी यहाँ पर ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पर मेरे को इस कलर से फिल करना है, मतलब इसका फिर से वो शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्ट बैकस्पेस। ठीक है, तो शॉर्टकट की मैंने प्रेस किया तो फिल हो गया। बट गलती क्या किया मैंने, गलती यहाँ पर न्यू लेयर नहीं क्रिएट किया। तो रीडू फिल, एडिट, यहाँ से आप रीडू कर सकते हो। ठीक है, रीडू कर दिया मैंने और यहाँ पर न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर क्रिएट किया, कंट्रोल शिफ्ट आई, फिर से सॉरी ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, फिर ये फिल हो गया इस कलर से। फिर इसके बाद मैं जो करूँगा, ये गलती के ऊपर गलती कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, लाइव स्ट्रीम का एक अलग सा प्रेशर रहता है। मेरा 4th डे है इसलिए आई गॉट यूज टू इट, बट पहला दिन में भी बहुत स्लो जा रहा था। बहुत ज़्यादा ही स्लो हो रहा है मेरा। तो अभी ठीक है, अभी न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, फिर से वही प्रोसेस जो है रिपीट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट आई और यहाँ पर जो है कलर मैंने इसको सिलेक्ट किया। ओके, तो एक कलर लिया, इसका जो कलर थोड़ा सा लाइट टोन में होगा तो लाइट टोन रखा और थोड़ा सा लाइट टोन रखा। ओके, और इसका फिर से ऑल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कलर चेंज हो गया मेरा। फिर इसके बाद इस लेयर पे जाके कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया, ये सिलेक्ट इनवर्स हो गया। अभी इसके बाद इसको फिर से जाएंगे, इस कलर को सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिर जो है ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये फिल हो गया कलर से। अभी इसके ऊपर मैं जो करूँगा, ये वाला जो लेयर है, अभी कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, डी सिलेक्ट कर दिया। अभी ये वाला लेयर को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, ऐसे ऊपर लेके गया, ये मिड पे ही रहेगा, बेसिकली ये मिड पे ही रहेगा। हाँ, तो इसका और एक कॉपी क्रिएट करेंगे, इसको अभी के लिए हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद यहाँ पर जो लेयर आ रहा है इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो ब्लेंडिंग ऑप्शन आ जाता है। ब्लेंडिंग ऑप्शन आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पर भी आ जाता है ब्लेंडिंग ऑप्शन। मैं प्रेफर करता हूँ डबल क्लिक करके ओपन करना। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन आ गया। अभी ड्रॉप शैडो को ऑन करेंगे तो देखो मेरा जो है शैडो ये आ गया, तो ये क्रिएट हो गया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जो मेरा सिलेक्ट इनवर्स किया था, मतलब बैकग्राउंड वाला जो लेयर है, बैकग्राउंड वाला लेयर के ऊपर मेरे को ऐसा कुछ दिखाना है, ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ दिखाना है। ठीक है, तो इसको ट्रांसपेरेंट में कैसे दिखा सकता हूँ, तो ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए यहाँ पर पहले आपको जो है ओपेसिटी डाउन करना पड़ेगा। एक प्रोसेस रहता है ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए, स्क्रीन करके, यहाँ पर स्क्रीन अप्लाई करके, बट ये वाला लूप मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। स्क्रीन अप्लाई करके अगर ट्रांसपेरेंट करता हूँ, यहाँ पर फिर जो है इमेज में जाके एडजस्टमेंट, फिर यहाँ पर डीसैचुरेट करके यहाँ पर पूरा ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। बट ऐसा वाला मेरे को लूप जो है ना पसंद नहीं आता है, मतलब यहाँ पर इस जो है जो बना रहा हूँ इसमें अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं उसको So basically we are trying to create a frosted glass effect, right? On top of it. हाँ, राइट। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को ओपेसिटी डाउन करेंगे, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ओपेसिटी डाउन करेंगे। मेरे को इसी कलर में चाहिए, जैसे स्क्रीन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा लाइट टोन में जा रहा था, मेरे को इसी टोन में चाहिए, तो इसलिए मैं ओपेसिटी डाउन कर रहा हूँ। इसमें ओपेसिटी डाउन करेंगे तो थोड़ा बहुत जो है इस टोन में मेंटेन रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो डाउन किया मैंने। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मेरे को, बट इसका जो है इसको ओपेसिटी अगर डाउन कर रहा हूँ तो इसके ऊपर ड्रॉप शैडो भी डाउन हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इतना सा रखा। अभी इसके बाद मेरे को थोड़ा सा काप को जो है पोजीशन करना है, पहले इसको डिलीट करता हूँ। काप को पोजीशन करने के बाद इसको कॉपी करेंगे, तो कंट्रोल प्लस टी से ट्रांसफॉर्म टूल आता है, जो इसको आप मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो मैं ऐसा कुछ रखेंगे और इसको साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ऐसे यहाँ पर कॉर्नर पे जो दो साइड का जो एरो आ रहा है, इस जब आएगा इसको थोड़ा ड्रैग करोगे तो इसको स्केल अप एंड डाउन कर सकते हो बेसिकली। तो
यहाँ पर किया मैंने। फिर इसके बाद मेरे को जो है ना इसका कॉपी करना है, कंट्रोल से कॉपी किया। अभी कॉपी करने के बाद यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इसका और एक कॉपी लेंगे और इसको अभी के लिए हाइड करूँगा। और ये वाला जो लेयर है इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, आप जब कुछ इफेक्ट वगैरह अप्लाई करोगे तो वो बैकअप ऑप्शन से रह जाता है, मतलब उसके ऊपर वापस जाके काम कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपका इफेक्ट जो भी अप्लाई करोगे यहाँ पर विजिबल है, तो उसके ऊपर डबल क्लिक करके आप जो है ना काम कर सकते हो, बाद में एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी दिखाएंगे उसको कैसे करना है। तो यहाँ पर पहले फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जाके यहाँ पर ब्लर, गॉसियन ब्लर अप्लाई करेंगे थोड़ा, ठीक है। ग्लो के लिए थोड़ा गॉसियन ब्लर अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ओके, और देखो यहाँ पर शो हो गया, जो मैं इफेक्ट अप्लाई किया यहाँ पर शो हो गया। अगर आपको इसके ऊपर चेंज करना है, ये गॉसियन ब्लर का जितना वैल्यू है वो वैल्यू चेंज करना है, तो आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरे को याद आया, सुमित सर ने चावल जो है ना वहाँ पर गैस में जो है रखा था, मेरे को बोला था ग्रेट देखने के लिए, शायद चावल जल गया। ग्रेट, लाइव स्ट्रीम के चक्कर में चावल जल गया बेचारे का। कोई बात नहीं, लाइव स्ट्रीम तो जा रहा है अभी। क्या करना है, यू वांना कंटिन्यू और यू वांना गो एंड कुक योर डिनर? कंटिन्यू कर लेता, सुमित जी है अभी। ओके ओके, फिर इट्स ओके। Mahadev sir will continue. By the way, you guys cannot see Mahadev's face right now as I was not prepared that he will demonstrate something. तो अभी बस either I can show his face or his screen. तो I'm choosing his screen over his face. But if he comes tomorrow, then we will rearrange the layout so we can display both of the thing at the same time. So yeah, continue. Right. हाँ, अभी यहाँ पर सुमित जी है, सुनाई दे रहे सुमित जी? हेलो सुमित जी, शायद आई कैन नॉट सी इट राइट नाउ, एज इफ आई विल मिनिमाइज दिस व्यू, फिर वो स्ट्रीम से योर स्क्रीन विल डिसअपियर, सो आई विल चेक इट फ्रॉम माय। ओके ओके, ठीक है। ओके, कंटिन्यू। हाँ ओके, फटाफट ओके, लेता हूँ। आयुष पांडे इज बैक। हेलो आयुष पांडे। अच्छा, You are not Ayush Pandey, then who is he? Is he real viewer? I thought Ayush Pandey is you. लग तो रहा है। नहीं, आयुष पांडे तो मैं नहीं हूँ। Okay, that is what I was asking you. Okay. Okay. Hi Ayush. अच्छा, Thanks for coming back. my bad. ओके, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। Yep. ओके, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा ग्लो ऐड किया, बट यहाँ पर मेरे को अंदर में ग्लो नहीं चाहिए। ग्लो के वजह से मतलब बेसिकली ब्लर ऐड किया, तो ब्लर यहाँ पर अंदर में नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो काफ है, काफ का लोगो भी यहाँ पर सही से विजिबल नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट तो यही है। हाँ, मेन इम्पोर्टेंट तो यही है, इसको विजिबल अच्छी तरीके से कॉन्ट्रास्ट लेके आना, दिखाना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मेरे को इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज कर सकते हैं, जो है लेयर मास्क। लेयर मास्क काम क्या करता है? लेयर मास्क बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर काम करता है। ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी आपका 100% मतलब उसको ओपेक बोलता है, जो व्हाइट कलर से जाना जाता है। अभी 100% है, इसको ओपेक बोलता है, व्हाइट कलर से जाना जाता है। और जो 0% होगा उसको ब्लैक कलर से जाना जाता है। और जो मिड पे रहेगा, मतलब 50% इसका वैल्यू रहेगा ओपेसिटी, तो उसको ग्रे कलर से जाना जाता है। ग्रे कलर मतलब इसको ऑल्टरनेटिव जो नेम होता है उसका सेमी ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, ठीक है, उसको बोलता है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लेयर मास्क काम करते हैं। तो लेयर मास्क जो है, अभी यहाँ पर जो लेयर मास्क यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, इसको अभी डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो डिलीट लेयर मास्क, ठीक है। तो अभी न्यू हम लोग लेयर मास्क ऐड करेंगे। यहाँ पर लेयर मास्क ऐड कर दिया, तो मेरा जो लेयर मास्क है यहाँ पर कलर व्हाइट है,
और यहाँ पर जो है ऑब्वियसली ये दो कलर, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड व्हाइट भी होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। बेसिकली ग्रे कलर, जो कलर चूज करोगे वहां से ग्रे कलर का वैल्यू उठा लेता है, तो वो ट्रांसलूसेंट जैसा फील देता है। तो इसलिए जो है ना, ये ऑपोजिट में काम करता है। लाइक यहाँ पर आपका व्हाइट है और यहाँ पर आपका ब्लैक है, तो ब्लैक है मतलब क्या है, ब्लैक है मतलब आपका इनविजिबल है, मतलब 0% ओपेसिटी। तो यहाँ पर आप ब्लैक है, यहाँ पर ब्रश टूल आप लो, ब्रश टूल लेके यहाँ पर जनरल ब्रशेस पे जाके यहाँ पर सॉफ्ट राउंड ब्रश सिलेक्ट करो। फिर इसका ब्रश का जो साइज है, इसको स्केल जो है साइज को डाउन, जो है स्केल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, थर्ड ब्रैकेट एंड वाला जो है वो इंक्रीज होता है और थर्ड ब्रैकेट ओपनिंग वाला जो है उससे डिक्रीज होता है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको डिक्रीज कर लेता हूँ। फिर डिक्रीज करने के बाद यहाँ पर जो है पेंट करना पड़ेगा आपको, तो फिर ये जो है ना मिट जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा आपका जो है। क्यों क्यों रिमूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर मतलब इनविजिबल, 0% ओपेसिटी, तो इसलिए ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो इतना सा काफी है। अभी इसके बाद मेरे को और एक बार अप्लाई करूँ ग्लो इफेक्ट, तो मतलब ब्लर अप्लाई करूँ तो अच्छा लगेगा, ग्लो लगेगा। यहाँ पर उतना तो ग्लो नहीं लगा है, तो और एक बार अप्लाई करके देख लेता हूँ फिल्टर। इसको पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। एक काम करता हूँ ना, इसका ही और एक कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल से कॉपी कर लिया। अभी इसके ऊपर जाके नहीं, ठीक है, इतना काफी है। ओके, अभी इसके बाद जो है ये वाला जो लेयर है इसको अभी के लिए हाइड कर लो। इसके ऊपर में राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर फिल्टर में जाके फिल्टर गैलरी, ठीक है, फिल्टर गैलरी में जाके यहाँ पर एक ग्रेन का ऑप्शन आता है, ये वाला। तो यहाँ पर ऑल्ट होल्ड करके मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो ये जूम आउट हो रहा है। तो अभी इसका इंटेंसिटी में इंक्रीज करूँगा इतना सा, कॉन्ट्रास्ट रेगुलर सॉफ्ट, रेगुलर ही रख रहा हूँ, इंटेंसिटी थोड़ा सा और भी इंक्रीज कर रहा हूँ इतना सा, ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ये अप्लाई हुआ है फिल्टर गैलरी में, ग्रेन तो अप्लाई हुआ है, बट यहाँ पर मेरे को जो है ना थोड़ा सा इसको कम करना है ग्रेन का इफेक्ट। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसको हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ से ओपेसिटी, यहाँ का जो मैंने ग्रेन अप्लाई किया उसका ओपेसिटी हम डाउन कर सकते हैं इसके थ्रू। इतना सा काफ़ी है। और इसका ओपेसिटी अगर मैं, और एक बात, यहाँ पर ओपेसिटी इसका कम करोगे तो ये तो कम नहीं होगा, मतलब जो ग्रीन कलर का मेरे को ओपेसिटी कम करना है बैकग्राउंड का जो है, तो यहाँ पर तो ये कम नहीं होगा। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया ना, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर में जाना पड़ेगा। अंदर में डबल क्लिक करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो साइन है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो अंदर में आ गया। फिर यहाँ पर ओपेसिटी थोड़ा सा डाउन करेंगे तो कैसे लगेगा एक बार देख सकता हूँ। और इसको डाउन किया तो यहाँ पर आपको जाके सेव करना पड़ेगा, फाइल में जाके सेव करो तो ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अपडेट हो गया, बट यहाँ पर ग्लो वाला इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है लेफ्ट में, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यहाँ पर जाके। ओके, डन। और ड्रॉप शैडो को थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, एक बार चेक कर लेता हूँ ड्रॉप शैडो वाला लेयर कौन सा है, ये वाला। ओके,
यहाँ से अगर ड्रॉप शैडो को मैं डिस्टेंस फेड साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो इतना सा फेड जो है इतना सा डिस्टेंस थोड़ा सा बस ओपेसिटी जो है फुल रखेंगे तो ओके करता हूँ ओके तो यहाँ पर अगर फाइल को मैं शेप करता हूँ तो कैसे लगता है एक बार चेक करेंगे राइट तो ज़्यादा हो गया ड्रॉप शैडो मेरे को लग रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा और कम कर दें नहीं तो एक काम करता हूँ यहाँ पर नहीं वो नहीं पॉसिबल है यहाँ पर जाके ओपेसिटी को अगर डाउन करूँगा और डिस्टेंस को थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं कर सकते कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ नहीं फेड ही अप्लाई करेंगे थोड़ा सा साइज को इतना सा ओके अभी फाइल में जाके सेव करेंगे फिर यहाँ पर जाके बहुत गंदा लग रहा है सही लग रहा है आई थिंक उसका ऑपेसिटी ठीक है, उसका डायरेक्शन थोड़ा ऑल्टर करेंगे हम लोग, देन आई थिंक वी विल बी एट अ बेटर प्लेस। लाइक अभी जो है वो हर तरफ से ही डायरेक्शन को अगर थोड़ा चेंज करें, उसका डायरेक्शन में सपोज इट इज़ कमिंग फ्रॉम लेफ्ट और कमिंग फ्रॉम राइट वैसा करेंगे ना तो आई थिंक इट विल बी बेटर। अभी लग रहा है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन और मोस्टली फ्रॉम द टॉप डायरेक्शन, बट इफ़ वी स्विच इट देन आई थिंक इट कैन seal the effect a bit better. ओके राइट तो यहाँ पर डायरेक्शन अगर मैं ऐसे राइट साइड से आ रहा है ऐसा कुछ दिखा रहा हूँ एंड आई थिंक उसका जो स्प्रेड है स्प्रेड से उसका हार्डनेस कम होगा ना। आई थिंक वी शुड एक्सपेरिमेंट विद द स्प्रेड अ लिटिल एज वेल। हाँ स्प्रेड से थोड़ा हार्डनेस का थोड़ा कम करेंगे तो आई थिंक वी आर एट अ गुड प्लेस। हाँ राइट तो साइज क्या सही आ रहा है। अब एक बार उसमें देखते फिर वी कैन कंफर्म। अरे यार ठीक है थोड़ा सा साइज लग रहा है मेरे को इंक्रीज हो गया आपको क्या लग रहा है। वेल इट्स डिपेंडिंग ऑन एवरीवन्स पर्सनल टेस्ट बट अभी मुझे सॉफ्ट शैडो अच्छा लग रहा है हार्ट के कंपैरिजन में। हाँ नहीं मैं जो नहीं अच्छा साइज ऑफ द शैडो कितना आ रहा है। इट्स टेक्निकली नॉट कवरिंग अप द लोगो सो इट्स ऑल राइट वी हैव टू कीप द फोकस ऑन द लोगो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव सो वी आर स्पॉट ऑन रिगार्डिंग दैट। ओके तो यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट ऐड किया था ये वाला टॉप में लेकर आऊँगा and now we have to change the color of the text. Actually previously the text color and the background color got matched up so text टेक्स्ट जो है यहाँ पर टूल बार पैनल ऐसा क्यों आ रहा है ओके तो so we can double click on the text to select everything. यहाँ पर turn off the I think we should turn off the background then we can easily see the text and switch the color. ओके तो एक काम करता हूँ यहाँ पर ओके तो यहाँ पर इसको फिर से ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसके पीछे लेके जाऊँगा और यहाँ पर जो है कम टू स्टारबक्स ये वाला जो टेक्स्ट है और शिप हैप्पीनेस ये वाला टेक्स्ट को मैं अलग करूँगा तो इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं और टेक्स्ट मैंने
Okay, can I interrupt here? Like, I think I have a little easier thing. Well, this is, I think it's personal preference. What I would have done is, मैं उसी टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करता एंड उसमें से टेक्स्ट जो है एक में मैं कम टू स्टारबक्स रखता एंड शिप हैप्पीनेस को डिलीट कर देता, दूसरे में कम टू स्टारबक्स को डिलीट करता एंड शिप हैप्पीनेस रखता एंड फिर उस टेक्स्ट लेयर को पकड़ के उसका ट्रांसफॉर्म में चेंज कर देता. सो सेम ही चीज़ है. It's just our own personal preference how we prefer to do the things. राइट राइट राइट, हाँ है, ये भी कर सकते हैं. वही है, मतलब जो कंफर्टेबल, मैं एक्चुअली यही प्रोसेस यूज करता हूँ. I got that. इसलिए ऐसा हो गया. तो अभी यहाँ पर क्या करना है मेरे को, ये वाला जो टेक्स्ट है, मतलब ये वाला टेक्स्ट इतना सा मैं कट कर दूंगा. फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर आऊँगा कैरेक्टर पैनल पे और पैराग्राफ पैनल गायब हो गया. कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोगों को पैराग्राफ पैनल ओपन करो. बट यहाँ पर, हाँ राइट, तो यहाँ से कैरेक्टर पैनल में आया. फिर यहाँ पर मैं जो करूँगा, एरियल पे जाके बोल्ड ही सिलेक्ट है शायद, हाँ ब्लैक बोल्ड, ठीक है, ओके. अभी यहाँ पर और एक चीज़ करना पड़ेगा जो मेरा यहाँ पर कैपिटल में करना पड़ेगा. तो कैपिटल करूँगा तो ये वाला है कैपिटल कर लिया. और यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके मैं जो है यहाँ पर फिर से इसको भी कैपिटल में ही करूँगा. और यहाँ पर ब्लैक में ये वाला है, ओके राइट. तो मेरे को लग रहा है ये ब्लैक में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको फिर चेंज करके ब्लैक में ही कर लेता हूँ बोल्ड से, ठीक है. ब्लैक राइट. और यहाँ पर कलर जो है, कलर में ब्लैक में रखूँगा, ठीक है. और इसका भी कलर में ब्लैक में कर दे रहा हूँ. फिर आई थिंक दोनों ब्लैक करना सही नहीं होगा. वी कैन एक्सपेरिमेंट विद अ बिट ऑफ कॉन्ट्रास्ट. एक को लाइट रखते हैं, एक को डीप रखते हैं. हाँ वो भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर कलर जो है इसके हिसाब से थोड़ा लाइट रख लेता हूँ ना, जो बैकग्राउंड कलर है. आई थिंक यू कैन शिफ्ट मोर टुवर्ड्स वाइट, मतलब सैचुरेशन को थोड़ा हटा देंगे तो इट विल बी मोर रीडेबल. हाँ अभी पढ़ने में टेक्स्ट क्या लिखा है वो पढ़ने में इजी होगा. थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हो रहा है. हाँ ओके. तो यहाँ पर जो है इसका साइज मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा. 72 बहुत ज़्यादा हो गया. 36 सही है, नहीं 30 सही है. और इसका जो है, इसका भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर 36, ये वाला 36 नहीं 24 कर रहा हूँ. और यहाँ पर अगर मैं प्लेसिंग ऐसा करता हूँ, सॉरी इसको लॉक करना पड़ेगा. Not that one. You have the auto selection on the top side. You can see home button के साइड में जो auto selection का ऑप्शन होता है वो ऑन है ऊपर लेयर्स के साइड में. आफ्टर द मेनू बार, ऊपर मेनू बार के नीचे ऑन योर लेफ्ट गो टू टॉप. हाँ आप एक करके इसमें आओ. राइट साइड में सी देयर इज ऑप्शन कॉल्ड ऊपर जहाँ पे थे. हाँ राइट लेफ्ट, हाँ दैट सी दैट द ऑप्शन. Yes, if you turn that off, then it won't select automatically. It will only select the layer which you select from the layer panel. Now you have selected that layer from the layer panel, so you have to select the layer which you want. Now it won't select anything else. अरे राइट, बहुत हेल्पफुल हुआ.
Actually, previous versions अच्छा, of Photoshop अगर came ऐसे used to come as that feature turned off, हाँ, but then now the latest version of Photoshop comes like that, like auto selection is always on, so you have to turn that off manually. By the way, ओके I learned Photoshop before CC became popular. Before CC there was CS6 or something like that, I think. So I learned Photoshop in that version. ओके कितना वर्जन CC6 Yeah, I think it was called CS6 before CC became popular. Now you get Creative Cloud, but before ओके Creative Cloud there was CS6, I believe. I'm not sure. So I learned Photoshop during that time. So I am quite old. ओके मतलब बहुत पहले से मतलब बहुत पहले से ही कर रहे हो आप Yeah, I was in class 9. No, I was in class 10 back then. So like 10. It's been more than 11 years. हाँ बताओ 11 साल से ज़्यादा हो गया. लाइक 11 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को फोटोशॉप सीखे हुए. मैं क्लास 10 में था. इतना साल इसलिए तो बोल रहा हूँ आपका मतलब नॉलेज जो है बहुत बहुत ज़्यादा है No, तुमने अभी द डिज़ाइन which you just created right now, मैं ये क्रिएट नहीं कर पाता क्योंकि my mindset is like more into 3D right now. I know the technical skills, I know every ins and out of the software. मुझे technical skill पता है, but the thinking process अभी मेरा डिज़ाइन वाला नहीं है. It is more into 3D. So 2D डिज़ाइन का जो mindset होता है, I am like rusty in that thing. इसलिए I said कि if you demonstrate something, it will also refresh my knowledge, like my concepts can revive. राइट वो ये होता है मतलब अब जब एक हम लोगों का फील्ड में मतलब ऐसा होता है ना जब एक चीज के ऊपर घुस जाता हूँ तो वापस जो बैक में छोड़ के आया वो पूरे के लिए मतलब पूरा तो भूलता नहीं हूँ बट जो वो concept रस्टी है, हो जाता है. You have वो to keep तो- revising, keep revising, keep revising. तो डैमेज हो जाता है मतलब बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो जाता है Yes. जैसे मेरा 2023 में मेरा माया के ऊपर जितना फ्लो था FPS किया था उस टाइम में तो उस टाइम में जितना मेरा फ्लो था मैंने कुछ रीज़न के वजह से एक साल मेरा पूरा होल्ड हो गया तो उसकी वजह से मेरा पूरा कॉन्फिडेंट लो हो गया अभी तक भी लो हो गया मतलब अभी भी कर रहा हूँ बट लास्ट जो किया था शॉर्ट फिल्म इसके वजह से थोड़ा बहुत बूस्ट हुआ है फिर भी उसके जैसा तो बूस्ट नहीं हुआ है जब वो वहाँ पर 2000 FPS के हाँ, टाइम में अलग एक फ्लो आ जाता है. People's life change in that, and some people destroy their life during 24 FPS, destroy their career. नहीं ऐसा नहीं है Yeah, कोई बात नहीं. Let's not go in that direction right now. We are in live mode. हाँ राइट तो यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर आप जो है ना और एक चीज आपको ऑब्वियसली जब कुछ You are using rulers, right? गाइड आपको हाँ रोलर गाइड आपको ऑब्वियसली मेंटेन करना पड़ेगा तभी जाके आपका जो है ये बेसिकली ग्राफिक डिजाइन का रूल्स है आप जैसे फॉन्ट जो स्टाइल यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 2 टाइप ऑफ फॉन्ट स्टाइल यूज करना पड़ेगा ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल यूज नहीं कर सकते हो उसमें आपको 2 फॉन्ट स्टाइल यूज करके उसके ऊपर वेरिएशन कलर वगैरह और साइज इंक्रीज डिक्रीज ये सब कुछ करके आपको वेरिएशन देना पड़ेगा और ऑब्वियसली आप जो टेक्स्ट ऐड कर रहे हो और जो भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो सब कुछ जो है प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए अलाइन नहीं होगा तो आपका डिज़ाइन बहुत अनप्रोफेशनल लगता है अभी मैं यहाँ पर सोच रहा था कुछ डोडल इफेक्ट जैसा कुछ ऐड करूँ इसके बैकग्राउंड कौन सा इफेक्ट तो कैसे लगेगा कौन सा इफेक्ट डोडल इफेक्ट डोडल इफेक्ट ओके आई एम नॉट श्योर ऐड करके देखते हैं ना कैसा आता है. When in doubt just try it out.
When in doubt, try it out. मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा डूडल इफेक्ट, बट यहाँ पर जो है, अच्छा, अगर it is डूडल also इफेक्ट looking अप्लाई nice. करोगे, It's like a minimalistic design, काफी clean look है. हाँ, अगर मैं डूडल इफेक्ट यहाँ पर ऐड करूँ, हाँ कर सकते अच्छा, हो, you're talking यहाँ पर about तो बैकग्राउंड doodling है ना। effect, right? Doodles. You are talking about ओके doodles. सॉरी, Okay, मेरा got it, got it. प्रोनाउंसिएशन, सॉरी माय बैड, ये वाला स्पेलिंग गलत हो सकता है, माय मिस्टेक। So basically, those are overlays, right? ये Yes, basically overlays. हाँ GWDLE. हाँ, यहाँ पर I देखते think ही we से मिल can जाएगा। we can if you have your pen tab with you हाँ, right now, then you can actually draw few random shapes. But yeah, हाँ this कर is सकते also हैं, one बट important thing for every graphics designer. You have to keep a library of this kind of small 2D elements. Like you have to keep a library of different राइट kind of doodles, different kind of overlays, different kind of layouts. You have to maintain a library. राइट, जो मेरे पास अभी नहीं है, बट हम प्रेफर मतलब सजेस्ट करूँगा, ऑब्वियसली होना चाहिए। यहाँ पर PNG अगर वेक्टेजी से मिले तो हम कर सकते हैं। कैन यू generate can you generate the total effect PNG? Okay, so listen guys, this is how AI can be useful to us. Like, see, you saw the design was done completely by Mahadev. So his name is Mahadev. The his name is similar to our deity god. So yeah, I'm talking about the person Mahadev who is currently demonstrating this thing. He did everything by himself. He composed the shot, the design, he created those effects, everything. But at the for the last final touch, we are generating some images from AI which we will overlay on top of it. As creating those things will take some more time. Just to save time, we are going for this process. But for deadline purpose or for quick demonstration purpose, this is fine. But if you are totally anti AI, then you can obviously create your own doodles and maintain a huge library of things which you can access for your different needs and different projects. So it will probably take some more time to generate the image. तो मेरा बेसिकली जो है यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली शॉर्टली टाइम उतना है नहीं, तो मेरे को ये प्रोसेस यूज़ करना पड़ रहा है। So we तो can प्लीज extract different kind of elements from there. फाइल ओपन, यहाँ से मैं जो है कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, देन बैकग्राउंड के ऊपर प्लेस करेंगे, बैकग्राउंड वाला जो लेयर है उसके ऊपर ही हम लोग प्लेस करेंगे, Ctrl+V, Ctrl+T फॉर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। बट ये अच्छा शायद नहीं भी लग सकता है, क्योंकि हम लोगों का जो इफेक्ट है ये हाईलाइट नहीं होगा। अगर इसका ओपेसिटी डाउन करता हूँ तो कैसे लगता है, एक बार चेक करके देखता हूँ मैं।
बस ट्राई एंड एरर वाला प्रोसेस यूज कर रहा हूँ, नहीं भी लग सकता है अच्छा। अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, जो लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? It's giving a vibe. Maybe we have to alter, like it says come to, then again we have a text called come to Starbucks, so for those reasons it is causing some miscommunication, but otherwise the design element is good. We could have used some other doodling effects or style, then हाँ it would have been nice, but अभी के लिए तो it's like अंडरस्टैंडेबल कि ऐसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, बट दोज टेक्स्ट आर नॉट गोइंग विद द डिजाइन वेल। राइट राइट राइट, ये मेरे को जो बट इट इज गिविंग अ टेक्सचर, मेरे अ को लग रहा वाइब है टू इट, इट्स गिविंग अ वाइब टू द होल डिजाइन। राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो है, मेरे को जो लग रहा है, मेरा पर्सपेक्टिव से जो लग रहा है, ये वाला जो डूडल मैंने डाउनलोड किया, ये डूडल मेरे को इसके हिसाब से सही से मैच नहीं कर रहा है। तो एग्जैक्टली। अगर मैं जो है ना, अगर जो है ना लाइन डूडल जो मिलता यस। है, तो उसके ऊपर अगर मैं क्रिएट करूँ तो वो अच्छा लगेगा, बट अभी मेरे पास उतना टाइम है नहीं, तो अभी के लिए इतना तक ही रख रहा हूँ। फिर जो है ना, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके श्योर। तो नेक्स्ट स्ट्रीम when are you gonna join, like tomorrow? I'm streaming every single day. टुमारो, ओके। तो टुमारो जो है ना, नाइट को करते हैं, मतलब श्योर श्योर, वापस आने के कल बाद का ऑफिस स्ट्रीम वाला। रात को ही होगा, कल का स्ट्रीम रात हाँ को ही है, सो नो वरीज अबाउट दैट। एंड आई थिंक नाउ आई कैन विजुअलाइज योर, that is your face is there. पोस्टर डिजाइन। So yeah, that, तो आपको एक चीज, yes आपको yes एक चीज दिखाओ। yes sure, you can show. जो जो आपने जो दिया था कॉन्टैक्ट ग्राफिक डिजाइन का, रिवील करूँ काम? क्लाइंट वर्क रिवील करना इज नॉट एडवाइजेबल, नहीं इसको रहने देते हैं। हाँ 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 हाँ, वही इसलिए पूछा मैंने। ओके, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले। Starbucks। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सो अभी we have streamed for more than three and a half hour, so it is a good length, and मैं सुबह भी stream किया था, so probably all total में आज around 7 घंटा stream किया। that is like more than enough. We have seen the character been done, character का shirt हो चुका है, character का hair हो चुका है, so next दिन कल we are going to, like I will start working on the shoe of that character, then after final refinement of the entire character we will go for the retopology, and Mahadev will continue with this design, and we will figure out something to display both his screen and his face at the same time. Today it was not pre-planned, so that is causing this kind of situation which you're seeing on the screen right now, but that is all right. I hope you guys enjoyed a little, though we had very little viewers. We only get one or hardly 2 viewers. That's all right, we'll definitely grow. So take care, hopefully everything will be fine in your life. Even if it is not fine today, it will be fine eventually.